क्लीन एनर्जी में क्या इन्वेस्टमेंट है बताइए। In 2022, the Institute of Energy Economics and Financial Analysis published a report in which it estimated that India's current levels of investment in the renewable energy sector needs to be doubled to around $30 to $40 billion per year if it intends to meet its target of 450 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. आपने तो टारगेट रख दिया है, आपने 175 जो टारगेट रखा था गीगावाट की, उसका क्या सोलर 100 गीगावाट सोलर क्या हाल हुई आपको खुद पता है। 2020 अभी निकल जा रहे हैं, 2023 के टोटल 2023 की और हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका टारगेट पीछे पड़ गए हैं। आप वो कहेंगे कि कोविड थे, ये थे, वो थे, बहाना बनाने में आपका कोई जोड़ीगा तो नहीं है दुनिया में। सर मैं बताता हूं, the government has failed to strengthen its capacity for domestic production of solar panel. मंत्री खुद स्वीकार करेंगे ये। With around 80% of panels being imported from China, experts have stated that more than 30 indigenous farms should already exist by now, but instead the industry has been plagued by the lack of coherent policy framework, inadequate funding, import of cheap panels from China, and issues with energy storage and other infrastructure. An independent report from 2020 also found that in addition to the solar manufacturing capacity, the production of raw material such as cells and polysilicon are also lagging. अब कहां जाओगे? ये मैं नहीं कहते, चीन हमारे साथ कितने आगे बढ़ चुके हैं कि उनके पास सारे संसाधन हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, उसमें आप पीछे रह गए। अब बताइए, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, हिंदुस्तान में कुदरत के चलते हमारे सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है, फिर भी कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर में हम पीछे रह गए। अब खुद इसको जरूर मानेंगे। सर हो गया। सर मैं ये मोदी जी तो पंचतंत्र पंचामृत की बात करते, चारों तरफ हम अमृत की ध्वनि गूंजते हैं अभी हिंदुस्तान में, अमृत काल, पंच अमृत वगैरह वगैरह। हम चाहते हैं कि अगर हमारे चीजों की दामों में, अगर अमृत की चीजों की दामों में अगर अमृत की कुछ बरसात हो जाए तो हिंदुस्तान के लोग बच जाएगी। हर जगह अमृत होते हैं, आम लोगों की रोजमर्रा की चीज में सारे गरल गिरते हैं। फर्क ये है, एक तरफ अमृत, चारों तरफ गरल। कहां जाए हम लोग? हम सरल आदमी हैं, महंगाई पे गरल डालते हो। अब मोदी मतलब मुमकिन है, आप कहते हो मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता मोदी है तो महंगाई है, हम कहते हैं मोदी है तो गरल है, अमृत नहीं है। विषयांतर कर दिया आपने, हो गया अधीरदा विषयांतर कर दिया। चलिए। हाँ सर हो गया जी, हो गया सर। सर ये कहते हैं कि एज ऑफ अप्रैल 2022 इंडिया's installed capacity for power from renewable sources stand at 111.39 gigawatt, despite a previous target of achieving 175 gigawatt by 2022. Thus, the Prime Minister's commitment of 500 gigawatt by 2030 seems tokenism. Reports have pointed out that there is a mere rehashing of India's existing commitment to achieve 450 gigawatt capacity by 2030. सर मैं हो गया सर, मैं एकदम अंतिम में पहुंच गया। दो मुद्दे सर, नहीं मैं ये मंत्री की ध्यान आकर्षण करने के लिए दो मुद्दे रखना चाहते हैं। देखिए, मेरा बात नहीं, एक्सपर्ट्स की क्या कहना है ये आपको थोड़ा जिक्र करना चाहिए। एक्सपर्ट्स की, मेनी साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड एनजीओ बिलीव that the carbon trading is a dangerous distraction from the need to end fossil fuel use and move to a low carbon future. We do not have time to wait for a high price on carbon. We must shift to a low carbon energy, agriculture, transport and industrial world now. The best way to do this is through direct regulation. ये मेरा नहीं, एक्सपर्ट की मानना है। There are many downfalls to the carbon trading system. It has become a source of windfall profits for polluters through its failed mechanism, offshore carbon offsets, and it has in fact led to emission not being reduced but only regulated in a manner which ensures profits for the polluters with very little payoff to the environment. ये मैं आपको बस हो गया सर, लास्ट मतलब लास्ट सर the principle of carbon market, the सर मंत्री देखिए ध्यान से सुनते हैं, उनका जानकारी अच्छा लगता है। हाँ,
principle of carbon markets were established in the year 1997, Kyoto Protocol. But to date, there have been few, if any, measurable reduction in greenhouse gas. Measurable reduction. देखा है? कोई सबूत है इसका? Madam, greenhouse emission that can be attributed to this measure. The two most important carbon markets so far, the European Union emission trading system and the United Nations carbon offsetting scheme, clean development mechanism, are failures. Yet, new carbon markets based on these schemes are being planned in both developed and developing nations. मैं ये कंसर्न जताता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं बिल की विरोध करता हूं, नहीं, मैं एक्सपर्ट की बस हो गया सर हो गया सर जी. The second reason that carbon markets have been infested by corruption and non-transparency. When starting one project in India, research team realized that the Mumbai office of a major international consultancy appeared to have copied and pasted large chunks of documentation from one CDM project to another. In fact, carbon markets have created a lot of income for consultants, carbon brokers, and project developers, not to mention the validators, policymakers, NGO professionals, and academics who have made a living from this market. This is very little independent and democratic oversight in the system. Instead, there are many revolving doors between the business, policy, NGO, and university world, fueling acquisition of corruption. Thank you, सर हो गया सर. आज नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर की तिरोधान दिवस है. ये कुदरत को मानते हुए उन्होंने ये एक समय कहा था कि trees are the earth's endless effort to speak to the heaven. तो पेड़ बचाओ, पौधे बचाओ, कुदरत की बचाओ, हम रिन्यूएबल एनर्जी. गुरुदेव की पंक्तियों से आपने पूर्ण किया. श्री जीएस पोन जी. Thank you, sir, for giving me the opportunity to express my views on my party's view in the Energy Conservation Amendment Bill 2022. Sir, India stands at the forefront of addressing climate change and has committed to ambitious, nationally determined contributions. There is no doubt we need to adopt a bipartisan approach to this issue, as it is a question of the survival of our species. Our Prime Minister has reiterated India's commitment by aiming to install 500 gigawatts of non-fossil energy capacity by 2030, reduce emission intensity of GDP by 45% over 2005 levels, source 50% of the electricity from non-fossil sources by 2030, reduce carbon emission by 1 billion tons till 2030 and achieve net zero by 2070. India is the largest exporter of carbon credits. Therefore, it makes obvious sense that we set up our own national market and frame the necessary regulations for it. Media reports indicate that the Prime Minister may launch a national carbon trading platform on 15th August as Indian presses ahead with its climate commitments. And what better an occasion than Independence Day? This amendment seeks to mandate the use of non-fossil sources including green hydrogen, green ammonia, biomass, and ethanol for energy and feedstock, and I welcome this, sir. This move must also be backed by support for promoting research and innovation in this field. There is a need for incentivizing actions for emission reduction, leading to increased investments in clean energy and energy efficiency areas, and its amendment will be seen as a positive step in that direction. Currently, only commercial buildings are required to follow the energy efficiency code. The attempt to bring large residential buildings within the fold of energy conservation regime and to enhance the scope of energy conservation building code is also welcome. The proposal is expected to increase the cost of construction by 2 to 3%, but the recovery takes place within 4 to 5 years through reduced electricity bills. The estimate says that this is likely to save 1,20,000 crores worth of electricity by 2030 by avoiding generation of 3 billion units. While the proposal of the Act to indulge larger residential buildings is with an aim to promote sustainable habitats, we must ensure that this does not create a
regulatory quagmire that causes the industry to run from pillar to pillar and post to post. Let us ensure that we are creating an easy single window system that does not make the process of compliance difficult. We must make this, sir. And also, you also want to increase members in the Governing Council of Bureau of Energy Efficiency, but once again, why is the representation of the states are so poor? Why not accommodate more members for the states, sir? And I welcome the move to empower the state electricity regulatory commissions to make regulations for smooth discharge of its functions, as I believe state governments will have a very vital role to play in achieving the goals of energy conservancy. Many highly industrialized states are ready to take the lead in increasing generation of renewable energy and imposing strong green laws. For example, Tamil Nadu, under the able leadership of our Honorable Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, is exploring avenues and opportunities to develop our renewable energy infrastructure. I sincerely hope that the Union government will strengthen our efforts and support us in this regard, sir. Our CM M.K. Stalin has repeatedly urged the Union government to come out with strong, viable policies to boost renewable energy generation and promote energy conservancy. Tamil Nadu has been a pioneer in promoting renewable energy sources which are eco-friendly and non-exhaustive. The state is blessed with hot weather, vast coastline, and strong wind potential that are yet to be fully exploited to meet its energy requirement. So I seek the support of the Union government in ensuring that this bill provides sufficient autonomy to state agencies to draft policy and frameworks to mandate a shift to green energy. While I welcome this bill and the ambitious endeavor to protect our environment, we must also be aware of the fact that simply imposing rules and regulations on energy consumption alone will not suffice. The spirit and policy of this bill must also be a platform for us to discuss how our mere energy conservation alone won't help us to tackle the climate change. India committed to creating an additional carbon sink by increasing tree and forest cover to reduce CO2 emission to 550 metric tons by 2030, but where does that stand? Where do we stand on moving to electric vehicles and creating the infrastructure for them? We have been discussing ways to move to electric mobility for ages now, but are yet to see concrete steps to expand the necessary infrastructure on charging stations across the nation. And when are we going to push for all government offices and buildings to lead the way in being energy conscious? Take, for example, the Central Vista project. Reports say the Secretariat will be served by highly energy efficient and sustainable infrastructure. Sir, as much as support and welcome any measure that is affirmative action to tackle climate change and to minimize our impact on our environment, we must also remember that this is a goal that needs the constant effort and support of all sections of the government and society. We need to work towards making this a people's movement. Only then will it be true, achieve remarkable growth and sustainability. Thank you, sir. Shrimati Supriya Sule ji. Thank you, sir. I stand here to support the energy conservation bill, sir. So this entire journey of the energy is a long drawn journey globally. And I appreciate all the inputs on Friday made by the Honorable Minister, where he talked about the mixed basket that you're creating. I only seek a few clarifications from the Honorable Minister as a concerned citizen and as a concerned parliamentarian of this August House. So there was a story in the newspaper last week, I stand corrected. It says that India has dropped its target of establishing 500 gigawatt of renewable capacity by 2030, giving itself a flexibility of 50% of power from non-fossil fuel sources. This is the commitment, and the Cabinet on Wednesday approved, sir, that India's updated NDC to communicated with the UNFCCC. The updated NDC proposes about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based resources, dropping 500 gigawatt absolute targeted committed at the COP26. It also did not include the commitment of reducing 1 billion tons of carbon emissions. This is what has come in the newspaper. So I seek a clarification from the Honorable Minister that is this the factual situation and what is the policy of the government? Sir, because I'm very concerned.
because I follow Parliament very closely. I'm fortunate enough to be here and to hear very illustrious ministers speak exceptionally well. And last few weeks during question hour when the House has functioned, renewable energy has been talked about in a very positive manner, but at the same time, the coal ministry has also been very, very energetic and enthused by the work they're doing. They are talking about coal, they are talking about the mines, how well they are doing, how much more generation has to be done, ultra big projects by the government. So I humbly ask the government that what is the true policy of this government? Here you are going into mines and cones aggressively and telling how transparently it has been done, which is wonderful. Transparency is good for the nation, sir. But I think they are misleading the Honorable Prime Minister because both the mantralayas are giving completely conflicting information because they're contradicting each other. So I feel very, very concerned. So if you could kindly give me a clarification. Sir, I come from a background of a rural and an urban constituency, and actually this entire story, energy, started really from the sugar factories in Maharashtra, where renewable energy was really started. And in the objects and statements, you have said that you are looking at green hydrogen, green ammonia, biomass, ethanol, which is all wonderful. I'll seek a clarification on biomass from my little knowledge about, I have very little knowledge on power. But I would like to seek a clarification that both biomass has seen a lot of NPAs in investment. That are lobbies globally, sir, for this kind of matter, is what magazines and information says. So what is the position of Government of India on biomass? Because you've talked about this. And somehow biomass has not delivered the superior results that we have seen, like in ethanol. So if you could kindly clarify in the larger interest of the nation. And the other points are for solar. We are all for solar. We are very happy you're working so much in solar. I have to seek few clarifications from the Honorable Minister that in the land acquisition of solar plants, you normally give 1 year to a project. It takes 6 to 9 months to just acquire the land because it's thousands of acres that they need, that too directly from the farmer. It's so hard to do land acquisition. So why doesn't Government of India work closer with the states like we used to do for MIDCs? So why don't you use the MIDC model for land acquisition? This is just a suggestion to the government to improve the scheme. Because what happens is you give only 1 year or 18 months to the person who's doing. Because in your own reply last week in Parliament, you have said that most of the renewable energy projects in this country are done by private sector. And developers select it through a transparent bidding process. Very good, this government is very transparent. We are very proud and compliment them on their thing. But at the same time, is the policy really helping the person who is putting his own money? So land is a big challenge. So what intervention will the government do to make sure that the land government helps, like an MIDC, something similar? Is that possible? Second, during this COVID time, they have given a blanket extension to the windmills, which is a very good thing. Congratulations to the government. So because of the supply chain distribution, if in the renewable energies you have given it to the players, the investors of wind, why not do it same to the solars? They have also been similar. They are doing renewable energy. So why this step treatment given to solar? I mean, everybody should be treated. Everybody's been through challenges. So why does solar not get the same is my question to the Honorable Minister. Another big policy intervention which I'd like to ask the Honorable Minister. This government initially was doing a great job in all these bids. Now, in the last 6 to 8 months, you have changed a small policy, and this is purely from the newspapers. I can table wherever I've got this information from. When you get an L1, normally you give it to the L1. You all have started reverse bidding. Now, because of that, the viability becomes a big issue. Already he has delayed because of the land. And the last 6-8 months, most of these private developers, and the reason I'm saying private, because you yourself in your reply has said that all private people are only doing this business. So it's not that I'm speaking for some private agency. I'm going purely by the policy of the government and what has come in the question hour. So what is your stand on this? So will you, between this L1, then what's the point of L1 if you're doing reverse bidding? And the whole thing is the country is going to get affected, the consumer is going to get affected. So if you could clearly give me an answer on this policy thing. And what happens, sir, in this reverse bidding, I stand corrected, please correct me if I'm wrong. What happens is, if it doesn't work out for the private, it comes back to NTPC, which goes back to the government. So then private players will say, ki hum desh mein kar rahe, hum baahar jaake kar rahe, policy is more friendly. So why are you pushing
people who want to work in India away because of this one policy which has only come in the last 8 months, sir. It wasn't there before. So my request is, if you could clarify, it will be in the larger interest of the nation and all the people who want to work with the government. Sir, 2-3 quick questions. Even Adirda talked about R&D. Now you're talking about hydrogen. In your very introductory speech, you spoke very well about green ammonia, green hydrogen, which has all sounded wonderful, very encouraging. But what is the R&D that this government is doing? From the information that I have from a reply given by you, the central assistant has consistently, in 18-19 was 4,414. In 19-20, it was 3,000. In 2021, 2,800. And 2022, it is 2328. So it is continuously coming down. And your government has not reached a single target since it has come to power. People talked about GST. I won't go into that. I see you hinting at this. Just 2-3 very short points. Now, this PM Kusum scheme, you haven't reached a target. I'm just reading through it quickly. You said solar rooftop program. In that, you have only reached 15%. So many programs, off-grid decentralization of solar program, that has been stopped. Bioenergy program, stop. Small hydrogen program, stop. And the shortfall, sir, I'm just rushing through these points. Actually, I would have liked to speak a little more. For the total renewable energy of what this, not even 60% target has achieved. I'm not saying that why have you not achieved it, but the whole thing is, when the Honorable Minister opened, he said 60-40. Sir, we all know that when there is renewable energy done, we lose a lot in transmission. If about 100 is invested, only 20% gets used of it. So we do need that. And what transmission and distribution? What has this government done for transmission and distribution specifically of renewable energy? You've invested so much money in making this renewable, which is wonderful, but what have you done? Same thing about carbon credit trading. Carbon credit trading is wonderful, but it's all up in the air. Have you spoken to stakeholders? Have you consulted states? Have you consulted industry? Nothing, from the best of my knowledge. Last small point, sir, is about discoms. In the morning, he was a little upset about, the Honorable Minister was slightly agitated because of what happened between us. But sir, this needs serious discussion. Why did Government of India give money to states in that Udayan scheme? If I stand corrected, they gave it to the states so that we would reach the last mile. Garib, जो शोषित है, पीड़ित, जो दूर में रहता है गांव में, उसको बिजली मिले. उसके लिए आपने उदय स्कीम गिरी, स्टेट्स को पैसा दिया. जब दिया तब ऐसा नहीं कहा ये गरीब के लिए मैं दे रहा हूँ. States thought that was a scheme which was given to encourage the poor people, support the states. लोन मांगा, हमने मांगा तो नहीं था, आपने सामने से दिया. स्टेट्स तो मांगने नहीं आई थी, आपने किया बहुत अच्छी स्कीम है, ले लो पैसा. So if they gave the money, they did not say it's a scheme. Now they are saying कि it is given, no freebies allowed. Sir, how will it work like that? आप अगर किसान को बिजली दे रहे हो, उसमें दिक्कत क्या है? और sir, see the double standards of this government, sir, which really pains all of us. कि आप 6,000 किसान को दो, तो it is allowed. If the state gives free बिजली to the किसान, it's a freebie. तो आप करो तो अच्छा, हम करें तो सब बुरा. ऐसा नहीं हो सकता ना सर. So if you are giving 6,000 to them, we are happy, we compliment you, we congratulate you. अच्छी बात है. मैं तो कहती 6 का 12 करो, 12 का 18 करो, कोई नहीं. अच्छी बात है. You give it in their account, but why is this government anti-electricity only in the states? Sir, if you could kindly clarify all these points. I just, last one line, sir, I would just like to make a last point. I've cut all my other points. Is what government really needs to do is have a clear-cut policy. There is no, they keep changing policies every few months. That's why people are very anxious. And we need a wind and solar storage hybrid model. These models that we are working on are not going to work. We need a hybrid model, and that's what this government needs to lead. We are willing to work with them, but please give clear clarifications in the reply at policy level. Thank you, sir. धन्यवाद सभापति महोदय. जब भी हो ना सर, तो रोकना हो तो उसके 10 मिनट पहले हमको बता दें. तो अभी बोलना पड़ेगा क्या? का तो समय ही है. हाँ, 15 मिनट पहले बोलिए. जी प्लीज. ये सदन की आप प्रारंभ तो करें. ये जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल है सर, और औसतन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो कोई बड़ा निर्णय करके आते हैं, और फिर सरकार लौट के आती है तो फिर सो जाती है.
कई बार इंटरनेशनल कन्वेंशंस 20-20 साल के बाद हम लोग रेटिफाई करते हैं, लेकिन एक ऐसी सरकार इस देश में है और ऐसा नेतृत्व है कि 6 महीना पहले वो सरकार, देश के प्रधानमंत्री ग्लासगो समिट में जाते हैं और लौट करके 3 से 6 महीने के भीतर एक कानून में संशोधन ले आते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा कमिटमेंट है वो देश के 125 करोड़ लोगों के बीच में लाया जाए। ये शायद एक ही व्यक्ति इस काम को, क्षमा कीजिए पुराना भी हम लोग सदन में बैठते रहे देखे, लेकिन जिस महीनता के साथ, जिस गंभीरता के साथ भारत की सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री करते हैं, शायद ये अपने आप में एक अनोखा है। ये कानून बनाने का और इसमें संशोधन करने का जो मूल रूप से विषय है, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही है, और COP26 के समिट के बाद से जो ग्लासगो में हुआ था, देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के साथ किया था, और उसके बाद लौट करके उन्होंने, और ये खासियत है देश के प्रधानमंत्री का, एक फॉर्मूला दे देते हैं और फॉर्मूला इतिहास में चला जाता है और सरकार के लिए नीति बन जाता है। उसके बाद सरकारें काम करती हैं और वो कार्यान्वयन होता है और उसके लाभ देश के अंतिम किसान और गरीब को मिलता है। शायद ये पृष्ठभूमि है जिसका लाभ पूरा देश उठाता है, और इसीलिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि 2030 तक, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बिहार से हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री भी रहे, गृह सचिव भी रहे, उसके बाद आज भारत सरकार के मंत्री हैं, मेरे राज्य के हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बड़े शौक के साथ काम करते हैं। और हमें गर्व है कि भारत की सरकार ने बिहार से एक ऐसे मंत्री को इस कुर्सी पर बैठाया है जो देश की सेवा में और खास करके पर्यावरण से जुड़े एक बड़े विषय को लेकर के आज विधेयक के रूप में आए। और जो नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट हमें प्राप्त करना है 2030 तक 500 गीगावाट, लेकिन उससे एक बड़ी बात है, और इसमें एक ऐसा लक्ष्य है, और सतन जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो अपना लक्ष्य 5 साल, 10 साल, 15 साल का रखते हैं, और एक ऐसा लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री बनाया है जो शायद उस लक्ष्य के प्राप्ति के दौरान हम में से यहां कोई ना रहे, वो 2070 का है। और ये विजन होता है देश का और देश के उस लकीर को खींचने का कि हम रहे ना रहे, देश रहेगा, भारत माता रहेगी और वो देश चलता रहेगा। और आने वाली पीढ़ियों के लिए सदन में बैठ करके इतने सारे माननीय सांसद आज इस भरी दोपहरिया में निर्णय कर रहे हैं। यह है लोकतंत्र की ताकत जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम तैयारी करते हैं। सही बात है ना, सही बात है। और विधेयक में दिया है, स्वाभाविक रूप से देश का प्रगति हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और स्वाभाविक रूप से उसमें कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, क्योंकि अगर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करते हैं तो कार्बन कंजम्पशन बढ़ता है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो देश के विकास में चारों तरफ जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उसमें 24% वृद्धि हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स का। यानी कि अगर हम लोग इस देश में 3 बिलियन स्क्वायर, 2030 तक 3 बिलियन स्क्वायर मीटर, तो एक तरफ मानक है, लक्ष्य है देश के प्रगति का, गरीबों के लिए घर बनाना, मध्य वर्गीय लोगों के लिए घर बनाना, समृद्ध लोगों के लिए घर बनाना। हमारे लिए तो घर अभी शायद संभव नहीं हो पाएगा 1.25 लाख रुपए वेतन में, लेकिन घर बनाना और गरीबों तक घर बनाना और पहुंचाना एक बड़ा लक्ष्य है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी लक्ष्य तय कर देना कि इसके साथ साथ अगर इतने घर बनेंगे तो हम 300 बिलियन यूनिट सेव कर लेंगे, और 300 बिलियन यूनिट सेव करेंगे तो कार्बन ट्रेडिंग करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने जो COP26 में लक्ष्य तय किया था उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। महोदय, तो 2014 में हमारी सरकार आई, हमारी बिजली का उत्पादन क था, और 2018 में 1,64,000 मेगावाट, 2019 में 1,77,000, 2020 में 1,83,000 और 2022 में 2 लाख से पार कर चुके हैं। तो एक तरफ लक्ष्य है कि 125 करोड़ लोगों के घर तक बिजली पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, और उसके घर में उस रोशनी को पहुंचाना, उस बल्ब पढ़ाना, और छोटे बच्चे बच्चियां घर में किताब पढ़ सके, टीवी देख सके, वीडियो देख सके और जीवन बढ़िया बन सके। एक तरफ लक्ष्य है उसे पहुंचाना, लेकिन दूसरे तरफ भी हम साथ साथ लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और बड़े देश का ये सब चिन्ह होता है कि बड़े लक्ष्य के साथ साथ हम दुनिया के स्तर पर भी अपना मानक स्थापित करके अचीव करते हैं। और इसीलिए आज ये कंजर्वेशन बिल साथ साथ सरकार के लाइए, तो एक हर गरीब के कोने कोने, दूर दराज इलाके में बिजली का कनेक्शन पहुंचाना, किसान के खेत तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाना, और दुनिया के पटल पर भी कार्बन एमिशन कम करना, ये लक्ष्य साथ ले करना, ये नीतिगत फैसला देश के प्रधानमंत्री ने किया है, जिसको हम अचीव कर रहे हैं। आज देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक कर रहा है। सबसे अधिक चीन 6,875 बिलियन किलोवाट्स, अमेरिका 4,000 बिलियन किलोवाट्स, भारत सिर्फ 1,200।
लेकिन यह भी देखना होगा कि जो पावर जनरेशन में जिस तरह से लगातार 60% की वृद्धि प्रत्येक वर्ष हो रही है, यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि हम कहीं भी अपने विकास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन विकास से कॉम्प्रोमाइज न करने की स्थिति में एक बड़ा अद्भुत तथ्य उभर के आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पहले तो अपना जीवन इंसान जब चलता था तो वो सूर्य की रोशनी से तय करता था कि जब सूर्य का किरण बाहर आएगा तो उससे पहले हम उठ करके काम कर लेंगे, और 6 बजते बजते घर में रिटायर कर जाता था। और उस समय हम लोग निर्भर करते थे सूर्य पर, लकड़ी पर, स्ट्रॉ पर, गोबर पर। उसके बाद हम लोग ने दूसरा एनर्जी का सोर्स था मसल्स, घोड़े से हम लोग इस्तेमाल करते थे, विंड्स का, सेल्स का, पानी से, इस प्रकार से एक बैलेंस बना था। लेकिन जब सब लोगों की जरूरत हुई तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का निर्माण किया, वो 1752 में। और पहली बार दुनिया में बिजली, उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि बिजली जो एक अपने आप में प्रगति का कारण है, वो पर्यावरण के संकट का भी कारण बन सकता ही नहीं। और जब न्यूयॉर्क टाइम्स को 1752 में पहली बार बिजली का कनेक्शन न्यूयॉर्क में दिया, तो आज से 300 वर्ष पहले जब वो निर्णय हुआ होगा, वहां से चल करके इस सदन में, इस एयर कंडीशन एयर कंडीशन सभा में, इस बिजली के साथ, इस माइक्रोफोन के साथ वहां से चल के यहां आए हैं। और इस दौरान हम भूल गए हैं कि इसका एक भरपाई भी करने की जरूरत है, और देश के प्रधानमंत्री ने उस भरपाई करने का निर्णय दुनिया के पटल पर रख करके भारत में सब लोगों को इससे जोड़ने का। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई भारत इसमें कंट्रीब्यूट कहां करता है। मैं जरा अध्यक्ष जी वो पन्ना निकाल लूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ओईसीडी का रिपोर्ट है कि भाई भारत में लोग कहते हैं पर्यावरण के प्रति नहीं। तो दुनिया में अगर पर्यावरण का और कार्बन एमिशन का जो टैक्स है, एनवायरमेंटल टैक्स, वो 2% है, तो भारत में हम सब लोग आज 1% देते हैं। 1.25 करोड़ के लोग, कोई कम नहीं देते हैं, हम देते हैं। और हम नीतिगत रूप से मुफ्त बिजली भी देते हैं और टैक्स भी देते हैं। ये समकक्ष संतुलन कोई नहीं बना के दुनिया में चलता है। अगर इसके आगे देखें, अगर यूरोपियन यूनियन में 70% हम बिजली को टैक्स करते हैं, तो भारत में हम 50% करते हैं। ये बात दूसरी है कि डिस्कॉम्स फेलियर में है, लेकिन आज भी हम पर्यावरण के प्रति टैक्सेशन में, और ये ओईसीडी का रिपोर्ट है। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम हम बना रहे हैं, हम इसमें कमजोर थे, और इस सरकार इस विधेयक के माध्यम से हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सोचना, हमारा यहां उद्देश्य आज खड़ा होकर यह कहना कि सोच क्या होता है। और देश के प्रधानमंत्री, जब हम पर्यावरण संतुलन की बात कर रहे हैं तो यह हो रहा है कि बिजली फॉसिल से, फलाना से। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जाके इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी किया कि अगर यूरोप में अंधेरा रहेगा, अमेरिका में अंधेरा रहेगा, तो भारत में रोशनी रहेगी। तो भारत का बिजली इस रोशनी से, रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगा, तो चीन को पहुंचाएंगे और अमेरिका को पहुंचाएंगे। जब अमेरिका में रोशनी रहेगा तो तार से, बिजली से, वहां से रोशनी से, सूर्य की रोशनी से भारत आएगा। और देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के पटल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नींव रख दिया है। हमारे लिए गौरव का विषय है। महोदय, अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो सबसे रोचक विषय यह है। महोदय, मुझे 10 मिनट पहले जरूर बोल दीजिएगा। तो अभी से 10 मिनट प्रारंभ महोदय। चलिए, तो ये सही है सर, 10 मिनट मैं एकदम आपको 8 मिनट में खत्म कर दूंगा महोदय। तो इसके पश्चात हम लोग चलते हैं आगे एक तरफ से। हाँ सर, महोदय, हमारा दायित्व क्या है? और कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात करें तो एक बड़ा, अरुण जेटली साहब नहीं रहे, स्वर्गीय अरुण जेटली कहा करते थे, और पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ, पॉल्यूटर्स पे। साहब, अमेरिका का पॉल्यूशन क्या है? विकसित देश है, उनका पर कैपिटा पॉल्यूशन 20 मिलियन मेट्रिक टन्स पर हेड है। रशिया 11, EU 9.4, जापान 9.87, और भारत कितना है? भारत का कितना? 1.4। भारत का है 1.4 और दुनिया का 4। हम तो इसको सब अनुपालन कर रहे हैं दुनिया के सामने हमारे लेकिन अगर देखा जाए तो साथ साथ, क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है, चीन आज दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है। दैट इज अबाउट 10,175 million tons of carbon dioxide. Then comes United States of America, 5,285. Of course, India is the third, which is 2,616, and Russia is 1,678. But per capita is our lowest in the country. And today, the emissions across the world, as per the OECD report, is around 35,000 million tons of carbon dioxide. Yes, it's a challenge.
एंड वी नीड टू कंट्रोल इट। क्यों? और यही सवाल है, क्योंकि मैं इसको वहां तक इसलिए ले जाना चाहता हूं कि मेरे लिए वो हमेशा एक विषय रहा है जिसको मैं हमेशा इस सदन में भी कहता हूं, और वो है क्लाइमेट चेंज से। और ये समय है फिर से देश को, लोगों को बताने का कि आखिर में कारण क्या है, इसका निर्णय हमें क्या करना है। इससे हमें हो सकता है कि इसका थोड़ा कॉस्ट हमारे पर ज्यादा है, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के बारे में यदि हमें सोचना है, इफ यू हैव टू थिंक अबाउट द पोस्टेरिटी, वी हैव टू डिसाइड दिस इन दिस हाउस, इन द विजनरी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वी हैव टू डिसाइड व्हाई। 1950 में अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जब हम टेम्परेचर राइज की बात करते थे, उससे ज्यादा हम बढ़ चुके हैं, और हम लोगों का लक्ष्य है कि क्योटो प्रोटोकॉल के पेरिस एग्रीमेंट में हमने कहा है कि इसको 2 डिग्री तक हम करेंगे। क्यों? आज हमारी आबादी दुनिया की लगभग 7.2 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर रही है। परिणाम क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है, दुनिया का फूड प्रोडक्शन कम आ रहा है, जिसका परिणाम है, इसका प्रभाव आज नहीं तो कल हम पर पड़ेगा। पानी का अभाव हो रहा है, और परिणाम है कि वैसे भी भारत में देखिए, दुनिया में जो पानी का जो हम देखते हैं, जो 3% पीने लायक है, 97% पानी पीने योग्य नहीं। 3% में से भी 1% पीने योग्य पोर्टेबल वाटर है, और बाकी 2% तो समुद्र में है, या पहाड़ों पे चोटियों पर है, बर्फ में है, या धरती के नीचे है। तो पानी का भी अभाव है। वैसी स्थिति में यदि ये संतुलन बिगड़ता है तो आने वाली पीढ़ियों में हम सब लोगों की चिंता की। हम लोगों को लगता है छोटा सा, अगर पौराणिक रूप से कहते थे कि पीपल का पेड़ लगाना है, लेकिन एक पीपल का पेड़ 4 दिन में एक पूरे व्यक्ति के ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है। इसीलिए कहा गया है कि पीपल का पेड़ लगाया जाए। जो मधुमक्खियां, एक मधुमक्खी 80 किलोमीटर घूम करके आती है और 1 चम्मच शहद बनाती है, और मधुमक्खी और बाकी सब जो पॉल्यूशन जो पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर हम देखें तो लगभग 400 बिलियन वो छोटी छोटी तितलियां, वो छोटी छोटी पतंगियां, छोटे छोटे मधुमक्खियां, ये कभी हम लोगों से आके कुछ मांगती नहीं है। ये कहती नहीं है कि साहब मेरा पेमेंट क्या हुआ, मैंने इतना मेहनत करके शहद बनाया। वो तो ये कहती है कि हमारे बचाने का, हमारे संरक्षण का, पर्यावरण का संरक्षण कर दो, हम मुफ्त तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, कभी तुमसे मांगने नहीं आएंगे। और वो आज ये सदन बैठ के तय कर रहा है कि इन मधुमक्खियों को हम कैसे बचाएंगे, इस तितलियों को हम कैसे बचाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी यहां सुख सुविधा से रह सके। महोदय, मैं छोटा सा उदाहरण, भारत में 1.54 बिलियन के आसपास, लेकिन 300 मिलियन पशुओं का डेथ होता है, मरते हैं। और पिछले 10 वर्षों में 75,000 गिद्ध, वल्चर्स गिद्ध ही कहेंगे ना, 75,000 गिद्ध मर गए हैं। परिणाम क्या होता है कि पशुएं जब मरती हैं, वो वहां पर ढेर में जो उनको पहले वल्चर्स खाते थे उनको खा नहीं पाते हैं, वो वहां पड़े रहते हैं, प्यूट्रीफाई कर जाते हैं, और उसमें से एक जो विष निकलता है उसे एंथ्रैक्स कहते हैं। और एंथ्रैक्स अगर जब गर्मी का मौसम आता है तो पूरे दुनिया में फैलता है। जैसे सहारन डेजर्ट से हवा चला तो भारत की तरफ तभी राजस्थान से होते हुए भारत के ऊपर आएगा, दिल्ली के ऊपर भी आएगा। और वो छोटे छोटे ऐसे कीटाणु होते हैं जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो आपके नर्वस सिस्टम को हार्म कर सकते हैं। ये सब चीजें 100 साल में होंगी। इसको रोकने के लिए हम आज काम कर रहे हैं, और इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था हम सब यहाँ कायम कर रहे हैं। महोदय, मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं, मैं इस विषय पर बहुत विषयों को रखना चाहता हूं, लेकिन यही मैं कहना चाहूंगा। आपने मुझे 10 मिनट का समय समापन के पूर्व दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन सर, ये नियम आज ही भर के लिए और यहीं तक लागू है, इसके आगे लागू नहीं होगा। जी जी, आगे 2 मिनट पहले बताएंगे। आगे से 2 मिनट, ये मेरे लिए स्पेशल रूप से, क्योंकि प्रस्तावना जो देता है उसको थोड़ा सा इसका रियायत मिलता है। महोदय, हमें पर्यावरण के प्रति देश के प्रधानमंत्री का और हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा सोच है। पर्यावरण के लिए ही आज देश के माननीय मंत्री जी, इधर देख ही नहीं रहे मंत्री जी, आपका मैं इतना सुन रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिएगा, छोटा छोटा बात सब है। और मैं मंत्री जी को आभार देना चाहूंगा, इन्होंने बिजली के क्षेत्र में बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, और बिहार में तो विशेष रूप से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी। और बिहार का विजन 2025, अब आने वाले दिनों में बिहार को परिवर्तित कर देना है, बिहार को दुनिया का। महोदय, मेरे लिए चिंता का एक ही विषय, महोदय, लास्ट सेंटेंस, पूरे देश में बिहारी आगे है और बिहार पीछे है। जैसे हमारे बिहारी आगे हैं माननीय मंत्री जी, बिहार पीछे है। इसका रास्ता माननीय मंत्री जी हम लोग को बिहार में निकालना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत श्री के नवसकानी जी। நன்றி மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களே. எரிசக்தி பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா 2022 மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்ற வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பாரிஸ் உடன்படிக்கையின்படி நம்முடைய நாடு கையொப்பமிட்டு 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் ஒன்றிய அரசு விழித்துக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றது என்ற நிலையில்
குறைந்தபட்சம் இப்போதாவது பசுமை ஆற்றலின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டு அதில் இந்த அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த அரசு வழக்கம் போல கொடுக்கும் தவறான வாக்குறுதிகள் உறுதியற்ற நம்பிக்கைகளைப் போல இல்லாமல் இயற்கையின் மீது அக்கறை கொண்டு, நம்முடைய சுற்றுச்சூழல் மீது அக்கறை கொண்டு, வளரும் தலைமுறை மீது, நம் சந்ததியினர் இந்த மண்ணில்தான் வளர்ந்தாக வேண்டும் என்ற முக்கியமான தேவையை கருத்தில் கொண்டு பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள நேஷனலி டிட்டர்மைன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை அடைவதில் இந்த அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஆனால் நம்முடைய அரசு நிர்ணயித்திருக்கும் இலக்கு என்பது இந்த இயற்கை உணர்த்தும் அவசரத்திற்கு ஏற்றதாக இல்லை என்பதை வருத்தத்தோடு இங்கே பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். உலகில் 29% பசுமையுள்ள உமிழ்வை கொண்டிருக்கும் அமெரிக்காவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் 2050க்குள் பசுமையுள்ள உமிழ்வானது நிகர பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் என்ற இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளனர். அது அல்லாமல் உலகில் 27% பசுமையுள்ள உமிழ்வை கொண்டுள்ள சீனா 2060ஆம் ஆண்டில் பசுமையுள்ள உமிழ்வு நிகர பூஜ்ஜியமாக மாற இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. ஆனால் நம்முடைய நாடு வார்த்தைக்கு வார்த்தை நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் புதிய இந்தியா பிறந்து கொண்டே இருக்கின்ற நம்முடைய நாடு 2070 தான் பசுமையுள்ள உமிழ்வை நிகர பூஜ்ஜியமாக மாற்றுவதற்கு இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளது. இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் உலகில் பசுமையுள்ள உமிழ்வுகளில் இந்தியா வெறும் 6% மட்டுமே. மிக குறைவான பசுமையுள்ள உமிழ்வை கொண்டிருக்கும் நம்முடைய நாட்டிற்கு மிக மிக அதிகமான கால இடைவெளியில் தான் நிகர பூஜ்ஜியம் என்ற இலக்கை அடைய முடியும் என்று நீங்கள் இலக்கை நிர்ணயித்திருப்பது உள்ளபடியே பெரும் முரண்பாடாகும். நம்மை விட பல மடங்கு அதிக பசுமையுள்ள உமிழ்வை கொண்ட நாடுகள் எல்லாம் மிக குறைவான இடைவெளியில் இதற்காக இலக்கை நிர்ணயித்திருக்கும் போது, அதனை செயல்படுத்தி வரும்போது அவர்களால் அதனை செய்ய முடியும் என்றால் அதனை ஏன் நம்மால் செய்ய முடியாது என்ற கேள்வி இங்கே முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். இந்த அரசின் மெத்தனை போக்கை அது பிரதிபலிக்கிறது. இந்த எரிசக்தி பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா 2022 நோக்கங்களாக தொழில்துறை, கட்டிடங்கள், போக்குவரத்து போன்ற துறைகளில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி தேவையை அதிகரிப்பதற்கு முயல்கிறோம் என கூறுகிறோம். ஆனால் புதுப்பிக்கப்பட்ட எரிசக்தியை உருவாக்குவதற்கான புதிய தொழில்நுட்பங்கள், அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் போன்ற எந்த தெளிவான ஆழமான திட்டங்களும் அரசியல் முழுமையாக இல்லாது வியப்பளிக்கிறது. புதுப்பிக்கப்பட்ட எரிசக்திக்கான இந்தியாவின் தேவையை அதிகரிக்கும், அதன் மூலம் நாட்டின் கார்பன் அளவை குறைக்கும், 2030க்கு முன் பாரிஸ் ஒப்பந்த கால நிலை இலக்குகளை அடையவும் இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை பூர்த்தி செய்ய முயல்கிறது என இந்த அரசு கூறுகின்றது. பசுமையுள்ள உமிழ்வை கட்டுப்படுத்தும் நம்முடைய இலக்கு 2070 என மிக நீளமாக இருப்பதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் COP26 நாட்டில் பஞ்சமித்ரா பிராமிசஸ் என்ற வாக்குறுதியை உலக அரங்கில் அறிவித்தார். அந்த வாக்குறுதியை உண்மையிலேயே பஞ்சாமிர்தமாக மாற்றுவதும் அல்லது ஏட்டுச் சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது என்ற பழமொழியை போல வெறும் வாக்கு உறுதியாக வைத்திருப்பதும் இந்த அரசின் நடவடிக்கையில் தான் இருக்குது என்பதை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் தன்னுடைய பஞ்சாமிர்த வாக்குறுதியில் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டின் நான் பாசில் ஃபியூல் புதை வடிவ எரிபொருள் இல்லாத எரிசக்தி திறனை 500 மெகாவாட்டாக உயர்த்துவது முதல் நோக்கம். மேலும் 2030க்குள் நாட்டின் 50% எரிசக்தி தேவைகள் புதுப்பிக்கப்பட்ட எரிசக்தி ரினியூவபிள் எனர்ஜி ஆதாரங்களை பயன்படுத்தி பூர்த்தி செய்யப்படும் என மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அதற்கு என்ன புதிய தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள், என்ன மாற்று வழியை முழுமையாக திட்டமிட்டிருக்கிறீர்கள், அதை எப்படி செயல்படுத்தப் போகிறீர்கள் என்பதையும் விளக்கினால் தெளிவாக இருக்கும். உங்கள் இலக்குகளாக இருந்துவிடக்கூடாது. அதனை நிறைவேற்றுவதற்கான வழிமுறைகளையும் செயல்முறைகளையும் தெளிவாக வகுத்து செயல்படுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இலக்குகளை அடைவதற்கு மக்களின் வரிப்பணத்தை செலவு செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த வரிப்பணம் வீணாகாமல் தடுப்பதற்கும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட இலக்குகளை அடைய வழிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மக்களின் வரிப்பணத்தை வீணாக்காமல் இந்த இலக்குகளை அடைய நிதி, செயல்திறன் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் இந்த அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். விவசாயத்துறை மற்றும் நில பயன்பாடு மாற்றம் உள்ளிட்ட துறைகள் பசுமையுள்ள வாயு உமிழ்வில் கிட்டத்தட்ட 15% பங்களிக்கிறது. இந்த துறைகளில் உமிழ்வை குறைக்க அரசாங்கத்திடம் என்ன திட்டம், எந்த திட்டமும் இல்லை என தெரிகின்றது. இந்த அரசு சூரிய ஆற்றலில் சோலார் எனர்ஜி கவனம் செலுத்தும் அதே வேளையிலே இந்தியா கிட்டத்தட்ட 80% சோலார் காம்பனன்ட்களை சீனாவிடமிருந்து இறக்குமதி செய்கின்றது. சீனாவை சார்ந்து இருப்பதை இந்த அரசு குறைக்க வேண்டும் என்ற இலக்கோடு அரசு $2.6 பில்லியன் செலவழிக்கும் திட்டத்தை அரசு முன்வைத்திருக்கிறது. ஆனால் இதில் பெரும் வினோதம் என்னவென்றால் இந்த தொகையின் பெரும்பகுதி மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுடைய நண்பர்களான அதானி மற்றும் அம்பானிக்கு செல்வதுதான். வழக்கம் போல இதில் உங்களுடைய விசுவாசத்தை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நிவர்த்தியாக செய்து முடித்து விட்டீர்கள். இந்த இலக்கை மட்டும் எந்தவித குறையும் இல்லாமல் நிவர்த்தி செய்து விடுகிறீர்கள். புதுப்பிக்கப்பட்ட எரிசக்தி ரினியூவபிள் எனர்ஜி உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு முன்னணி மாநிலமாக உள்ளது. காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் இந்தியாவிலே தமிழகம் முதலிடம் வகிக்கிறது. எங்களுடைய தமிழ்நாடு ஒட்டுமொத்த நாட்டின் மொத்த காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட 45% பங்களிக்கிறது. தமிழ்நாடு போன்ற கிரீன் எனர்ஜி உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களை ஊக்குவிக்கும் முன்னும் போதுமான நிதி மற்றும் ஊக்கத்தொகையை ஒன்றிய அரசு வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோல சூரிய ஆற்றல் சாத்தியக்கூறுகளும் அதிகமாக உள்ளது. அதனை சரியான முறையில் ஆராய்ந்து பயன்படுத்த வேண்டும். கடலோர பகுதியில் குறிப்பாக என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதியான ராமநாதபுரம், அதுபோல
தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் காற்றாலைகள் அதிகம் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஒன்றிய அரசு ஆராய்ந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் வராத வகையில் புதுப்பிக்கப்பட்ட எரிசக்தியை உருவாக்க முயற்சிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோல தமிழகத்தின் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் கூட குறிப்பாக கோயம்புத்தூர், பொள்ளாச்சி போன்ற பகுதியில் காற்றாலைகள் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் உள்ளது. அதனையும் அரசு பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதுபோல பயோமாஸ் என்ற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உயிரியல் கழிவுகளை கொண்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றலை பெறுவதற்கு ஒரு பெரும் வாய்ப்பு உள்ளது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் 21 மாநகராட்சியில் 140 நகராட்சியில் தினமும் டன் கணக்கில் உயிரியல் கழிவுகள் உருவான இதனை எரிசக்தியாக மாற்றினால் நிலக்கரி அடிப்படையிலான மின்சாரத்தை குறைக்க நமக்கு மிக சாதகமான ஒரு நிலை ஏற்படும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது. எனவே இதில் ஒன்றிய அரசு கவனம் கொண்டு தமிழகத்திற்கு Sir, I stand in support of the Conservation Amendment Bill 2022. Sir, the objectives of the bill as spelled out to mandate use of non-fossil sources including green hydrogen, green ammonia, biomass, establish carbon markets, bring large residential buildings within the fold of the energy conservation regime, and enhance the scope of energy conservation. Sir, for long, industry has taken the global commons to be a dumping ground for carbon emissions, and this bill depicts an attitudinal shift. It is aimed at promoting energy conservation and make an end to the right that was nursed for long to pollute. This is the bill, as a matter of fact, is an extension of polluter to pay principle, and it combines all the three responses that we must adopt for energy conservation, that is use of market forces, use of regulator framework, and also extra focus on renewable energy. Sir, all the three have to work together if we have to achieve the targets. This bill is also in the nature of commitment to treaty obligations. Sir, while market forces use of market framework is a welcome step, but much depends on how this framework is made to work. If this framework does not work as expected, then this cannot have the desired results. Whatever is done today is done a little late, because in rest of the world, this use of market framework have started much before. It was immediately after Earth Summit of 1972, Brazil Summit. But if we have started today, and if we want to employ market forces, market framework to control carbon emissions, it's a welcome step. And we must expect that this, whatever framework is provided under this law, the bill, that is made to work efficiently, and we are able to stick to or achieve the targets. So, but at the same time, we should not bid goodbye to a regulatory framework. Both should work together. And last of all, we must have extra focus, as I said, that on renewable energy. And we must encourage use of renewable energy so that we can have less and less emissions, and we can have within limits emissions. And when we just make mention of renewable energy, but what is kind of depressing is that government has not taken adequate steps to encourage use of renewable energy, and we don't find government has not incentivized it. It has not provided extra incentives for all those who use energy to fall back on or to make use of the renewable energy. Sir, in lower Himalayas and in Jammu Kashmir particularly, it is very important to incentivize use of solar energy and renewable energy, because we know that forests constitute carbon sinks, apart from seas,
oceans, forests constitute carbon sinks, and if the depleting forest line is a cause of concern for everyone. Because if we don't have forests, or forests are put to danger, then an important carbon sink that is available to us, that absorbs a part of the emissions that we make, is not available. So I would request Honorable Minister to provide incentives in Jammu and Kashmir, so that, and not only in Jammu and Kashmir, but all the lower Himalayas, so that forest cover that is available to the country is saved. And the emissions that are otherwise a cause of concern, not only for in our country, but to entire humankind, those carbon emissions are reduced and are not, and do not play a role in climate change and ozone depletion. And at the same time, while taking every step to make the market framework that is sought to be employed a success, the industry should not be given a free hand. It should not, because only market framework independent of a regulatory framework is not going to get the desired results. We cannot give industry a free hand in making emissions only because they pay for it. Carbon trading is okay, but carbon trading has failed elsewhere because the only focus was placed on carbon trading. Carbon trading has to work side by side with the regulatory framework. We should not downplay the importance of regulatory framework where we put cap on the emissions, carbon emissions, then only we will be able to achieve whatever objectives are spelled out in this bill. And at the same time, as I requested, that we must place extra focus on use of renewable energy so that we encourage renewable energy. In absence of that, the object of the bill may not be achieved. Right. Thank you. Shri M.K. Vishnu Prasad ji. Thank you, Speaker Sir. I first of all would like to thank Honorable Shri Madam Sonia ji and Shri Rahul ji for giving me an opportunity to speak on this energy conservation bill. There are two types of energy, which we all know. One is a green energy and other one is a grey energy. Grey energy will give carbon, ash, but green energy is derived from the hydro, solar and tidal, and so many other factors. This bill mainly motivates the use of non-fossil renewable energy and discourages the use of fossil fuels. As we all know, this universe has a limited source of fossil fuels, and so according to the Paris Agreement, Honorable Prime Minister also has promised that by 2030, around 33 to 35% reduction in carbon emission will be achieved by India. We appreciate. Now let us see the salient features of the bill. The first point is usage of alternative fuels like green ammonia, green hydrogen, biomass and ethanol. I would like to say at this point of time, you know the world's largest and the cheapest producer of green hydrogen is Adani. This is a fact. Yes. So where the government is heading, the bill has to be passed, no doubt. Conservation is important. Carbon emission should be restricted. But where this bill ultimately is going to favor whom, we have to see. Hindustan should not become Adanistan or Ambanistan. Sir, it is a fact. It is a fact. No, please, apan apni baat rakhiye. And this bill again proposes Okay. to give a carbon emission certificate. The bill proposes to give a carbon emission certificate. We appreciate. Number 3, increase of members, governing council members of Bureau of Energy Conservation from 4 to 7. We appreciate. And of course, the fourth is very, very important, giving the carbon neutral companies a chance.
We all appreciate this bill. But there are some gray areas where you have to focus. Number one is building a green building, construction of green building. Of course, the investment is very high, around 15% more, and time consuming. And the special design and architect, who is skilled in India? How we are going to achieve this is $1 million question. Number two, the carbon neutral companies will give the energy. We welcome it. But from where these carbon neutral companies will find the resources to produce this energy? Obviously, they will be buying from some other company. And how far they are going to be the carbon neutral companies is again a space of ambiguity where we have to go in depth. If that is going to emit more carbon, like production of steel is giving 35% carbon, then the idea is defeated. And moreover, the governing bodies, who is giving the carbon certificate, is not the government. Some NGOs may give. Then people have to believe the authenticity of this certification. And last, the governing body members, this Bureau of Conservation, Energy Conservation, has underutilized the funds by around 50% in the last 2 years. So this has to be taken seriously. Then most importantly, the clean energy we are talking about. See, I would like to quote one important thing from Ramayana, which you will not object. In Ramayana, Rama was feeling very weak to defeat Ravana. So he went and prayed Aditya. Yato yuddha parishtantam. Samare sinte yashitam. Recited by Agastya Muni to Rama. Because you have to derive energy from solar, from sun, Ravi, Hari. See, when that is the case, this government has reduced the budget of giving Solar Energy Corporation, which is the only PSU run by the Ministry of New and Renewable Energy, from 1,800 crores last year to only 1,000 crores this year. Then where is the balance? What is the justification this government is going to give? You have to increase the solar energy, you have to increase the generation of solar power, but you are reducing the fund allocation. At the same time, subsidies by around 60% is being reduced by this government of the solar panels. And GST is increased from 5 to 12%. Where is the justification? And import duty for the solar panels to be imported is increased. I appreciate the government wants to domestic manufacturing company to be encouraged. We all appreciate. But this domestic manufacturing company has to import certain component from abroad. For them, this import duty is going to cost them very heavily. So these things has to be considered. Sir, Tata has invested on 311 billion. He is going to invest in phased manner to achieve the carbon neutral status. This two cars, the electric vehicle, is having almost 70% share. What is the government of India doing? Why they are not promoting these electric vehicles manufacturing by a government PSU? Why they are keeping quiet? Only these bills are passed to favor certain private companies. Ambani, see, this is a fact. They are contributing to the zero emission. I have no objection. He is going to be invest around 78 billion. Adani is going to invest 70 billion. Seeing that Adani is going to invest in the zero energy, zero carbon emission status, the French company called Total Energy has invested around 20 billion. So 20% stake he has taken. See why these things are happening. Why cannot the government support a PSU, whereas Maharatnas, around 7 companies, have invested 11 times more on fossil fuel energy? Why they cannot invest on this green energy? So these things government has to provide. And so for all these things, I strongly object. The conservation, energy conservation is very important. Honorable Minister today is passing this bill without considering us. He may consider or he may pass because of the members' majority. But he is the bill is on energy conservation.
But on electricity bill, he has exhausted a lot of energy. So he has to conserve the energy in order to save our country. And please be brief. Very well spoken. Excellent. Sir, I, on behalf of my party, the Biju Janata Dal, rise to support the Energy Conservation Amendment Bill 2022, which seeks to enable provisions to make the use of clean energy, including green hydrogen, mandatory and to establish carbon markets, sir. This bill seeks to mandate use of non-fossil sources, including biomass and ethanol for energy, and feedstock, along with the use of green hydrogen and green ammonia. It also proposes to enhance the scope of Energy Conservation Building Code and bring large residential buildings within the ambit of energy conservation regime. It is important to note that the Energy Conservation Act 2001 was last amended in the year 2010 to address various new factors which had emerged over a period of time and to provide of more efficient and effective use of energy and its conservation. A need has thus arisen to further amend the Act to facilitate climate targets committed at COP26 summit, sir, promote renewable energy and development of domestic carbon market to battle climate change. Next, I would like to highlight the features of this bill and our observations, sir. One of the unique features of the proposed amendment is it introduces the concept of carbon trading, sir. Carbon credit trading is a fairly effective mechanism towards reducing carbon emissions, involvement of private players in sustainable climate change actions. It was adopted by the European Union to slow down climate change. However, there are various drawbacks to it, sir. Carbon trading involves high transaction costs as each firm pollutes at varying levels, and it is difficult to calculate the extent of pollution. Hence, there is a dire need to propose parameters on the basis of which fair and accurate computation of carbon emissions will take place. Further, a mechanism to regulate carbon trading and ensure transparency is missing, and it needs to be set up, sir. So this bill also introduces the concept of sustainable buildings, a phrase which had been missing in the words of the Act. It provides norms and standards in the building code for energy conservation and efficient use of renewable energy. This is a commendable feature as it fills a gap in the existing statute and is a progressive step in the direction of achieving sustainable development. Another important feature is the proposed amendment is that it allows the state commissions to make regulations and decide the fees payable for various applications. The bill will also empower state governments, sir, to make rules regarding fees to be charged, services by the designated agency for promoting efficient use of energy, along with the preparation of the budget of the designated agency. This accords the flexibility to states to make rules as per their specific requirements. In conclusion, sir, I would like to state that promotion of renewable energy conservation as well as efficient use of energy and carbon credit trading are the need of the hour to achieve the sustainable development goals in line with the Paris Agreement. For India to battle climate change, we must mandate the use of non-fossil resources and ensure that we reduce our dependence on carbon, which is very, very important, sir. It is remarkable that this bill also recognizes vehicles and vessels as sources of energy exploitation. Carbon credit market comes at a high transaction cost, and accurate parameters as well as transparent mechanism for regulation of carbon trading needs to be set up. Sir, in the words of our Honorable Chief Minister, Sri Naveen Patnaik, sir, quote, sustainable management of our natural resources and bounties of Mother Earth is deeply linked to human health and better future. Let's all learn to live in harmony with nature and keep it healthy for future generation, unquote, sir. This push for carbon markets is especially essential as India aims to turn carbon neutral by 2070. We wholeheartedly support this bill, sir. Thank you. And at the same time, hope that the government looks into some of the concerns highlighted by us on behalf of our party, the Biju Janata Dal. Thank you, sir. Jai Hind, Vande Mataram. Thanks, to be brief. Shri N.K. Premchandran ji. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me this opportunity. Sir, the Honorable Power Minister is one of the good learned friend of mine.
but I am still in utter confusion whether to support or oppose the bill. We should not. Why? Because the bill is ambiguous, vague, unclear, and the intent of the legislation is not manifested in the bill. That is a basic reason by which I am in a confusion whether to support or oppose the bill. Why, I will explain, sir. So the basic and the most important matter ingredient to be followed in the legislative process is what is the intent of the bill? What is the aims and objectives of the bill by which it is to be achieved? Here it is quite unfortunate to note that the amendment proposal is not being manifested in the intent is not manifested in the bill. You see, sir, the original principle Energy Conservation Act of 2001, it was enacted to provide for the efficient use of energy and its conservation, for which a Bureau of Energy Efficiency is also established, and to enforce the measures of this efficient use of energy and its conservation. So none of us in this house will oppose the basic concept of efficient use of energy and its conservation. Nobody opposes it, and we fully support it because it is need of the hour, not for the present but for the future generation also. It is highly essential, so we fully support. And further, sir, it is our commitment in COP26 in Glasgow conference of parties COP26, that is the Panchamrit, the 5 important elements which the government of India has committed in that conference, 5 principles. So by this amendment, as per the statement of objects and reasons, the government intends to 1. Facilitate the achievement of Panchamrit, 5 elements committed in Glasgow. 2. Promote renewable energy and development of carbon market to fight climate change. And number 3, introduce a new scheme of carbon trading and mandate use of non-fossil energy sources. Sir, here I do support all these efforts at 3 provisions or 3 issues relating, the provisions relating to the efforts at 3 issues. That is, mandate use of non-fossil energy sources by prescribing minimum consumption of non-fossil energy sources, number 1. And number 2, bringing large residential buildings under the regime of energy conservation. And number 3, strengthening the Bureau of Energy Efficiency by increasing the number of board of members, and all these things I do support. Sir, except the new concept of carbon market, I have very serious apprehension, for which I am seeking a detailed clarification from the Honorable Energy Minister. Sir, this is a new concept incorporated in this bill. I reasonably apprehend that the amendment bill is designed with the sole intent to facilitate carbon trading. Sir, I draw your attention. It is very interesting to note that what is meant by carbon trading, or what is meant by this carbon trading or carbon market, it is not been defined in the bill. That is my strong objection. See, if you see, according to my limited information, limited knowledge, on the basis of my reference, my homework, I could understand what is carbon trading. Sir, carbon trading is a system of countries meeting the national carbon dioxide reduction by buying carbon credit as earned when a firm funds a project for a technology that is less polluting than the other option. For example, carbon emission is less for gas-based power plants than the diesel, where the amount of carbon saved is the credit. This is my information, or this is my knowledge. But here in this bill, I would like to ask or seek the Honorable Minister, please explain where the carbon trading or the carbon credit scheme is explained. Nothing is explained. Then what for the Parliament? The Parliament has the authority to know what is meant by carbon credit scheme. Sir, Section 2DB. Section 2DB is the definition clause or the explanation clause for the carbon credit scheme. It means a scheme for the reduction of carbon emission notified by the central government under clause W of Section 14. It is being in Section 2DB, it is stated that it will be specified in clause W of Section 14. What Section 14W says? The central government may, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, specify the carbon credit scheme. Who knows what is carbon credit scheme? The Parliament has the authority. It is a prerogative of the Parliament to know what is a carbon credit scheme. And Section 13, and there also it is explained. In Section 13, subclause TE,
The Bureau of Energy Efficiency has the power to recommend to the central government on the requirements to be specified in the carbon credit scheme. What are the requirements to be explained or incorporated in the carbon credit scheme will be recommended by the Bureau of Energy Efficiency. 14W will explain or specify a scheme, and definition says that it will be as per 14W. I would like to know from the Honorable Minister, what is carbon credit scheme according to this legislation? According to this legislation, there is no specific clear-cut definition as far as the carbon credit scheme is concerned. Sir, I will convey within two suggestions. That means, that means you are putting the parliament in darkness, for which some ulterior motives I apprehend. Only my apprehension, some ulterior motives are there. So for which I am seeking a clarification from the Honorable Minister. Sir, I am putting two suggestions. Number one, it is very important to distinguish between trade within the country and between the countries. Sir, I caution the government not to lose our control. Not to lose our control over the forests to corporates in the name of carbon trading. Sir, number two, further I urge upon the government of India should use the UN forums to argue for the carbon reduction, and please remove the shortcuts like carbon trading. Sir, because climate change is a very serious issue, to resolve this, the world requires actual reduction in carbon emission. Sir, 2 sentences. The carbon emitters may avoid actual reduction in carbon emission in the name of carbon trading. That will further worsen the climate change. So, subject to the strong reservation in carbon trading, I support other provisions of the bill, and I am seeking a crystal clear clarification from the Honorable Minister regarding this aspect. With these words, I conclude. Thank you very much, sir, for giving me this much of time. जरा संक्षेप में गौरव जी। पूरा सर, क्योंकि हमारे पिछले जो वक्ता थे कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग पे उन्होंने काफी बात रखी, तो वही मैं कुछ सुझाव आपके द्वारा सरकार को देना चाहूंगा। और ये सच है कि इसको लेके बहुत सी हमारी डाउट्स है, कंसर्न्स है, तो शायद बेहतर होगा कि सरकार इस बिल को आने वाले समय में स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करे, ताकि कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग हम अच्छी तरह से किस प्रकार से भारत में लागू कर पाए, उसके प्रति हमारी विचार विमर्श स्टेक होल्डर्स के साथ हो। तो सबसे पहले मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि जब वो ये एमिशंस ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो सरकार लेजिस्लेशन के द्वारा एमिशंस पर एक कैप बनाए, एक हार्ड कैप इंट्रोड्यूस करे, तो ताकि हाई एमिशन जो एंटिटीज है उनको पता चल जाए कि कौन से कैप तक वो एमिट कर सकते हैं और किसके बाद वो कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि वास्तविक में इंडस्ट्री इस कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म को अपनाएं, तो इंडस्ट्री को हमें पहले से ही बताना पड़ेगा कि ये हमारा हार्ड कैप क्या होना चाहिए ग्रीन हाउस एमिशंस के लिए। और ये एमिशंस ट्रेडिंग इवन दो सर कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं ये सफल हुआ है, कहीं ये विफल हुआ है, इसमें हमको जोर देना है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें क्लाइमेट चेंज जुड़ा हुआ है, इसमें वायु प्रदूषण भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो कंपनीज जो वास्तविक में कार्बन ट्रेडिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो उनको हमें इंसेंटिव देना चाहिए। और जो लोग नहीं कर पा रहे, जो कंपनीज नहीं कर पा रहे, इसमें वो चोरी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप स्ट्रिक्ट पेनल्टी आप लाइए इस लेजिस्लेशन में, जो आज वर्तमान इस लेजिस्लेशन में नहीं है। तीसरी बात, एक और चीज जो हमने कार्बन ट्रेडिंग को साथ देखा हुआ है, खासकर की पावर जनरेशन में, तो पश्चिमी देशों में क्या हुआ है कि वहां पे जब भी कार्बन ट्रेडिंग या किसी प्रकार के नए पॉलिसी से कंपनी पर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन आता है, तो वो पूरा का पूरा बर्डन ग्राहकों को देते हैं। तो ऐसा बहुत हुआ है कि कंपनीज दे वांट द पावर सेक्टर ट्रांसफर्स द बर्डन of these emissions trading to the consumer। और कहीं ना कहीं इसलिए हमें डर उस सुबह के इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ भी है कि अगर आप पूरा प्राइवेटाइज करेंगे, तो हम अपने गरीब को आने वाले समय में अगर कोई निजी कंपनी बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ा दे, तो हम गरीब और किसानों को कैसे बचा के रखेंगे। चौथा जो हमारा ये सुझाव सरकार की तरफ से ये है कि आपको रेवेन्यू मिल सकता है एमिशंस ट्रेडिंग के साथ, आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू आपको मिलने का ये है। लेकिन इस रेवेन्यू को लेकर आप कहां जाएंगे? इस रेवेन्यू को लेकर सिर्फ आप अपने स्टेट फिस्कल या जो आपका फिस्कल हेल्थ है उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक में आज आप जो सबसे ज्यादा गरीब है, कृषक है, उनको मदद कर सकते हैं। उनको जो एनर्जी कॉस्ट आज दुनिया में बढ़ गया है, आज सबके अगर आप गांव में जाएं, क्षेत्र में जाएं, तो सब बोल रहे हैं कि आज इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है, आज पैसे देना है। तो इसीलिए जो भी आपको रेवेन्यू मिले, उससे जाके गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में लोगों को उसको सहायता मिले, वो आप देखिए।
और तीसरी जो हमारी जो चीजें हैं, हाँ 5, 6 और 7 3 और बॉस बोलनी है, तो वो वहां से 3 आ गया। तीन जो आखिरी के जो 3 पॉइंट है कि सबसे पहले ये तो आपने रिडक्शन पावर जनरेशन की बात कर दी कि ये हमारी पावर रिन्यूएबल्स आएंगे, ये विंड्स आएंगे, ये सोलर्स आएंगे, हाइड्रो पावर्स आएंगे, लेकिन ग्रिड का क्या होगा? क्या आज हमने उस प्रकार के ग्रिड बनाए हैं जो हाइब्रिड मॉडल में चल पाए, जो ग्रिड थोड़ा हाइड्रो पावर से चला ले, जो ग्रिड थर्मल से चलाए, जो ग्रिड विंड से चलाए, सोलर से चलाए, इस प्रकार के ग्रिड्स पर क्या हमने रिसर्च किया है, क्या हमने इन्वेस्ट किया है, कहीं आपने पायलट किया है? क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन करें और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान न दें तो ये सिर्फ आपका प्रोडक्शन में रह जाएगा। अगर आप तीसरा, आज हम समुद्र से घिरे हुए हैं, इंडियन ओशन हमारे दक्षिण में है, तो आज एक टाइडल एनर्जी को लेकर भी आज बहुत से इट्स अ ह्यूज फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कि जो वेव्स के नीचे जो टाइड्स है उसके साथ टाइडल एनर्जी में आज ऐसे कुछ छोटे छोटे देश है जो टाइडल एनर्जी में सबसे आगे हो गए हैं। आज स्कॉटलैंड जैसा एक छोटा देश टाइडल एनर्जी में बहुत आगे हो गया। हम कब आगे होंगे ये हम जानना चाहते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जोर दें, नई एनर्जी, नए स्टार्टअप्स पे जोर दें। ये ना सिर्फ जिम्मेदारी आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बनती है, पर निजी हमारे जो कंपनियां हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स है, उनको भी हम तंदुरुस्त कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि आपने अमोनिया की बात की है, आप कहीं ना कहीं ग्रीन मेथनॉल की भी आप बात करिए, क्योंकि बहुत से मेथनॉल की जो अभी हमारी बातचीत हो रही है देश में, पूरा बायोमास बेस्ड मेथनॉल है, जो वो भी बहुत कार्बन एमिटिंग है। जो बायोमास बेस्ड मेथनॉल की हम जनरेशन की बात कर रहे हैं वो भी बहुत हाई एमिटिंग है। तो इसलिए ग्रीन मेथनॉल जो इलेक्ट्रॉनिक से आए उस पे भी आप जोर दीजिए। और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि जो भी हमने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स देखे हैं वो अच्छा लगता है कि वो तमिलनाडु में है, अच्छा लगता है कि आपके स्टेट राजस्थान में है, लेकिन हमको भी चाहिए कि उत्तर पूर्वांचल में जहां पे सोलर इंटेंसिटी है, आप वहां पे सोलर एक ऐसा टेक्नोलॉजी करें ताकि उत्तर पूर्वांचल में भी हम रिन्यूएबल एनर्जी कर पाए। हाइड्रो पावर के साथ हमने किया है, लेकिन हाइड्रो पावर हमेशा हमारे एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के साथ हम बहुत कंसर्न है। तो मैं चाहूंगा कि रिन्यूएबल एनर्जी और मेथनॉल बायोमास पे आप लोग अच्छी तरीके से रिसर्च करके उत्तर पूर्वांचल में भी ग्रीन इंडिया में भाग लेने का एक मौका हमें दें। धन्यवाद। श्रीकांत सिंधे जी, डॉक्टर श्रीकांत सिंधे नहीं है तो मंत्री जी उनको बुला दीजिए। मनोज राजौरिया 2 मिनट। डॉक्टर मनोज राजौरिया 2 मिनट, 2 मिनट केवल, ओनली 2 मिनट। 2 मिनट जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं आज एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे ऊर्जा मंत्री जी को कि जिस तरीके से 2014 में आने के बाद में देश के प्रत्येक व्यक्ति को बिजली पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में किया जा रहा है, उसी की एक कड़ी के रूप में ये विधेयक आज लोकसभा के अंदर लाया जा रहा है। माननीय महोदय जी, इस विधेयक के अंदर बहुत सारे ऐसे सुधार हैं जो देश को आज से 100 साल बाद में भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किस तरीके से हम उपलब्ध करा सकते हैं उसको आगे लेके जाएगा। जो पेरिस का समझौता COP26 जो समझौता किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल का जो समझौता किया गया था, उसको भी प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। वन नेशन वन ग्रिड जो हमने बनाई है उसके माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से किस तरीके से देश रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों को बढ़ाता जाएगा और जो फॉसिल एनर्जी है, जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है जिससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, उसको कैसे कम किया जाएगा, इसके क्षेत्र में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा। माननीय सभापति महोदय जी, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कार्बन मार्केट की बात हमारे कुछ मित्र कर रहे थे। एक किसी भी चीज की ऊर्जा का जब ग्रेडिंग की जाती है, आज शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको नैक की ग्रेडिंग की जाती है, इसी प्रकार से जब ऊर्जा के क्षेत्र में जब कार्बन मार्केटिंग की जाएगी उसका एक सर्टिफिकेशन होगा। भारत सरकार या उसके किसी ऑथराइज एजेंसी के द्वारा जब सर्टिफिकेट क्या दिया जाएगा तो किसी संस्था को यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उसकी जो ऊर्जा उत्पादन शक्ति है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कितना योगदान और फॉसिल एनर्जी का कितना योगदान है। सभापति महोदय जी, मुझे लगता है कि इस बिल के माध्यम से भारत न सिर्फ राज्यों के साथ में अच्छा समन्वय करके
और राज्यों को शक्ति दी गई है कि वो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी का अधिक से अधिक उपयोग करें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को कि जिस तरीके से इन्होंने भारत सरकार को ये कानून जो लेके आए हैं, इस कानून के माध्यम से देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं को, रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकताओं को अगले 100 वर्ष में पूरा करके न सिर्फ प्रत्येक भारतीय व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का काम किया है, बल्कि दुनिया में भारत का नाम और भारत की लीडरशिप किस तरीके से स्थापित की जाए, प्रत्येक व्यक्ति के घर में रोशनी की जाए, उस रोशनी को स्थापना करने का काम इस बिल के द्वारा किया जाएगा। माननीय महोदय जी, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से इतना बड़ा काम इस देश में किया जा रहा है कि पिछले मैं सिर्फ 8 साल की भी बात करूं तो 2014 से अब तक लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विद्युत सुधार के काम किए गए हैं, मैं सिर्फ उनका नाम आपको लेना चाहूंगा मंत्री जी। अगर उन सुधारों की जन कल्याणकारी विद्युत के क्षेत्र में जन कल्याणकारी नीतियों की मैं चर्चा करूंगा तो मुझे लगता है कि घंटों घंटों कम पड़ जाएंगे, लेकिन आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। सिर्फ नाम बताना चाहूंगा कि 2014 के बाद में जिस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाई गई और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से नए सब स्टेशन इस देश में 83 लागे, संवर्धन के 284 का किया गया, ट्रांसमिशन की स्थापना की गई है। ऐसे ही माननीय सभापति महोदय जी, एकीकृत विद्युत विकास योजना लाई गई है, सौभाग्य योजना लाई गई है जिसमें कि हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया गया, स्मार्ट मीटरिंग का काम किया गया है। आज स्मार्ट मीटर के माध्यम से देश में 19 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटरों का जो स्थापना की जा चुकी है। ऐसा ही नहीं, जल के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से और अनेकों हाइड्रोजन एनर्जी के माध्यम से अनेकों ऊर्जा के जो नए स्रोत हैं, उन स्रोतों के माध्यम से देश के अंदर ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो, उस ऊर्जा का कमर्शियल उत्पाद हो, रेजिडेंशियल उत्पाद हो, कृषि क्षेत्र में हो, और न सिर्फ भारत की उपयोगिता को, आवश्यकता को पूरा करे, बल्कि विदेशों में निर्यात भी कैसे किया जा सकता है। और ऊर्जा के माध्यम से महोदय जी, मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति बनने को और विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ेगा। 2 मिनट में बात पूरी कीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि व्हेन द वेल इज ड्राई वी नो द वर्थ ऑफ वाटर। उनकी कही हुई बात आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन पूरे देश में एक चर्चा का विषय है और इसका सबसे प्रमुख कारण फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है। हमारे प्रधानमंत्री ने ग्लासगो समिट में भारत का पक्ष रखा, जिसके अंतर्गत हमारे एमिशन टारगेट्स क्या होंगे, किस प्रकार हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कैसे भारत जलवायु परिवर्तन के विषय पर एक अग्रणी भूमिका में रहेगा। हमारी प्राथमिकता अब यह होनी चाहिए कि किस प्रकार इस लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाए और हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित किया जाए। आज इस सदन में हम एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा कर रहे हैं, जो सबसे पहले 2001 में लाया गया था और 2010 में अमेंड हुआ था। आज 12 वर्ष बाद इस कानून का संशोधन किया जा रहा है। देश में ऊर्जा का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी हो गया है। ऊर्जा का संरक्षण वर्तमान में करने से भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कई प्रकार की समस्याएं कम हो जाएगी। यदि वर्तमान में ऊर्जा संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऊर्जा या एनर्जी की अगर बात करें तो इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हमारे शास्त्रों में भी ऊर्जा का वर्णन है और ऊर्जा हमारे देश में हर एक्टिविटी का स्रोत है, जो चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो या आम आदमी के जीवन से। इसलिए आज ये बिल और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा भविष्य तय करेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है उसके गोल्स को भी हम अचीव कर सकेंगे। क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसमें बाढ़ और सूखा जैसे प्राकृतिक आपदा और भीषण होते जा रहे हैं। उसमें 90,000 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान होता है और यह हर साल की कहानी है, जिसमें कितने लोग, जिसमें किसान, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति एक नकारात्मक ढंग से प्रभावित होते हैं। आज सदन में चर्चा और संवाद हो रहा है और मुझे भरोसा है कि सरकार एक सकारात्मक एक्शन प्लान की संरक्षा करेगी, क्योंकि यह विषय राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित और हमारे विकास से संबंधित है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ला रही है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन एक डायनामिक और इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और टेक्नोलॉजी के साथ हम क्लीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कुछ सुझाव हैं
क्लॉज 3 के माध्यम से इस विधेयक में सरकार ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की सदस्यों की संख्या 26 से बढ़ाकर 37 कर दी है और इस कमेटी में मेजर कंपोजिशन ब्यूरोक्रेट्स का है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। हमारे कई ऐसे साथी हैं इस संसद में जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इस कमेटी में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसे लोगों की भी इसमें लोगों को डालें। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में अर्बन लोकल बॉडीज पंचायत का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस का दायित्व है सबसे मैक्रो लेवल पर एनर्जी कंजर्वेशन करना। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें यूएलबी और पंचायत को भी भागीदार बनाया जाए। मेरा पहला सुझाव और एक सुझाव है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत सबसे ज्यादा शेयर सोलर एनर्जी का है, लेकिन वर्तमान में सोलर एनर्जी का प्रयोग सिर्फ इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एंटाइटीज द्वारा किया जा रहा है और रेजिडेंशियल सेक्टर में अभी भी यह स्कीम पॉपुलर नहीं है। इसका प्रमुख कारण है कि रेजिडेंशियल एरियाज में सोलर प्लांट या रूफटॉप ग्रिड लगाने के लिए किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं दिया जाता है और जिस प्रकार आज इस बिल के माध्यम से आप ऑफिस बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल एरियाज को एनर्जी कंजर्वेशन कोड के अंतर्गत ला रहे हैं, वैसे ही रेजिडेंशियल सोलर सब्सिडी या इंसेंटिव के लिए भी सरकार कोई योजना लाए। मेरा और एक सुझाव है कि सरकार द्वारा 50 में से सिर्फ 39 सोलर प्लांट्स को स्वीकृति दी गई है और उसमें से सिर्फ 8 पार्क्स का काम पूरा किया जा सका है और 6 पार्क्स ऐसे हैं कि जिनका पार्शियल कंप्लीशन हुआ है। हमारा लक्ष्य था कि 40 गीगावाट्स का जो अभी भी लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हो पाया है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा इस मिशन मोड पे पूरा किया जाए। सोलर प्लांट्स लगाने के सबसे बड़ा इशू जमीन की उपलब्धता है और इसके लिए सरकार को पीएसयू के सरप्लस लैंड को यूटिलाइज करने की योजना बनानी चाहिए और इसके अतिरिक्त जैसे कोचीन एयरपोर्ट फुल्ली सोलर पावर प्लांट पर चल रहे हैं, वैसे ही अन्य एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन को भी सोलर प्लांट्स पर चलाने की योजना बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमारा फोकस अभी तक सिर्फ स्टैटिक सोलर प्लांट्स पर है। अब हमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स, पावर प्लांट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खांडवा में नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि देश के अन्य राज्यों में भी नदियों पर ऐसी सोलर पावर प्लांट्स लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह न सिर्फ एनर्जी जनरेट करेगी पर इसका एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह भी विकसित हम कर सकते हैं। जी, अगला है हाइब्रिड मॉडल। मेरा अगला सुझाव है कि हमें अब हाइब्रिड मॉडल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सरकार ने सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट की एक योजना बनाई है, लेकिन अब आवश्यकता है कि हम सोलर के साथ अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी हाइब्रिड मॉडल पर शुरू किया जाए। जैसे वेस्ट अफ्रीका में नॉर्वे सरकार ने एक सोलर हाइड्रो हाइब्रिड प्रोजेक्ट बना रही है। घाना में वेस्ट अफ्रीका में 400 मेगावाट्स के हाइड्रो सोलर प्लांट्स का निर्माण कर रहे हैं और उसी तरह से मुझे लगता है कि कल मिथुन जी ने एक उदाहरण दिया कि तेलंगाना में एक सोलर, आंध्रा में सोलर हाइड्रो पावर प्लांट। तो मुझे लगता है कि दिन के वक्त में सोलर प्लांट काम करेगा और रात के वक्त में ग्रेविटी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। तो ये एक अच्छा मॉडल है जो हर पूरे देश में रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी है। फिर उसी के साथ में नाउ प्लीज खत्म करो सर। हम स्मार्ट मीटर्स तो लगाते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर्स जो हम लगा रहे हैं सब जगह पर, खाली वहां पर रीडिंग्स की अनुमान हमें मिलता है। हमें यह अनुमान मिलता नहीं है कि कौन सा अप्लायंस कितना एनर्जी खा रहा है, कितना एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो स्मार्ट मीटर सिर्फ एनर्जी रीडिंग के लिए नहीं, पहले वो जो मीटर थे पुराने उसको खाली चेंज करके डिजिटाइज किया गया और उसको स्मार्ट मीटर कहा गया। तो अगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे बाहर के देशों में है कि कौन सा अप्लायंस कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी सेविंग के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं और एनर्जी कम यूटिलाइज हो सकता है। सर खत्म, लास्ट पॉइंट। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ब्रिंगिंग इन लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स could be relevant to maximize the gains from energy efficiency. For example, Japan has developed a carbon reduction reporting system for small and medium enterprises, which involves both mandatory and voluntary reporting to the Tokyo municipal government. Based on these inputs, the Tokyo municipal government then educates the SMEs about strategies to gear them in a desirable direction in
Curitiba, Brazil, an improved public transportation system has led to one of the lowest per capita gasoline consumption in Brazil despite the second highest car ownership rate. तो इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और ये बहुत अच्छा विधेयक है कि मैं इसको माननीय मंत्री जी कुछ सुधारों की भी आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ Thank you, Mr. Speaker, sir. I want to first thank all the honourable members who spoke. जगदम्बिका पाल जी, महुआ मैत्रा जी, जयदेव गल्ला जी, निधुन रेड्डी जी, संतोष कुमार जी, गिरीश चंद्र जी, रंजीत रेड्डी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, सुप्रिया सुले जी, राजीव प्रताप रूडी जी, के नवाज जी, हसन मसूदी जी, GS पौन जी, विष्णु प्रसाद जी, अनुभव मोहंती जी, NK प्रेमचंदन जी, गौरव गोगोई जी, मनोज रजोड़िया जी, शिंदे जी. The debate was positive and most of the speakers have supported this bill. Mr. Speaker, sir, in the power sector, Honourable Speaker, sir, in the power sector, there are many things which we can be proud of as a country. इस सेक्टर में जो हमने किया है उस पर हमें गर्व होने का अधिकार है दुनिया भर में. When we connected every village in just about 987 days, the Prime Minister had given us a target of 1,000 days. At that time, the International Energy Agency came out with a tweet saying that this was the best news of the energy sector in 2018. When we connected 28.6 million homes, now it's 28.8 million homes, when we connected every home, हर घर को हम लोगों ने connect किया. And the direction still stands कि अगर कोई घर छूटा हुआ है तो उसको भी connect कर देना है. We'll connect if any house is left out, that also has to be connected. When we connected every home, when we connected 28 million homes in just about 18-19 months, I mean, the International Agency said that this was the largest expansion of access in the shortest time frame ever in the history of the power sector. We've done this as a country. I mean, in one stroke, we connected every village, every home. We converted our country from power deficit to power surplus. I mean, today we have about 400,000 megawatts installed capacity. We connected the whole country to one grid, converting our grid into the largest grid in the world. These are things to be proud of. And we also can be proud of, and this is not me saying it. All the countries say we can be proud of our record in energy transition, in the installation of renewable energy capacities. We can be proud of it as a country. Our per capita emissions are 1/3, are the lowest in the world, Mr. Speaker, sir. Our per capita emissions are the lowest in the world. Despite that, we have emerged as the only large economy and only G20 country whose energy transition actions are consonant with a sub-2-degree rise in global temperature. हमारा पर कैपिटा एमिशन दुनिया में सबसे कम, लेकिन ये एनर्जी ट्रांजिशन में और एमिशंस कम करने का जो टारगेट है उसमें हम दुनिया के लीडर में इमर्ज किए. अभी कैपेसिटी की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात हो रही थी. अध्यक्ष महोदय, हमारी आज हम लोगों ने, जैसे कि हमने पिछली बार भी कहा था, हम लोगों ने आज अपनी हमारी स्थापित क्षमता हो गई है नॉन फॉसिल फ्यूल की 1,67,000 मेगावाट और करीब 82,000 मेगावाट हमारा अंडर इंस्टॉलेशन. जिस गति से हमने रिन्यूएबल एनर्जी ये नॉन फॉसिल हुआ उसमें से न्यूक्लियर आप निकाल दें तो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो कि स्थापित है 1,61,000 मेगावाट और 72,000 मेगावाट हमारा अंडर इंस्टॉलेशन है. तो लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने वी हैड प्रॉमिस्ड दैट बाय 2022 विल एस्टैब्लिश 175 गीगावाट्स ऑफ कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड वी हैव मिस्ड इट. बट दिस इज द क्वेश्चन, वी हैव नॉट मिस्ड द टारगेट. We are not only on the target, in fact, we are ahead of the target. We would have been much ahead of the target if the COVID had not intervened. Because remember, I'm talking about only renewable energy capacity, I'm not adding nuclear. My renewable energy capacity is installed is 161 gigawatts and 72 gigawatts is under installation. We have had the fastest rate of growth of renewable energy capacity in the world, bar none.
जिस गति से हमने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अपने जोड़ा है, ये दुनिया में सबसे तेज गति है। ये हम नहीं कहते, द होल वर्ल्ड सेज इट। सो वी हैव, आई मीन, वी एज अ कंट्री कैन बी प्राउड ऑफ इट। One of our NDCs we've fulfilled 9 years in advance capacity. Now my capacity is more than 40%. My established non-fossil capacity is more than 40% of my total capacity. It's 41%. And just a minute, let me just, I've got just hold. No, just hold on. Just एक बार फिर आपको बता दूं, मैं सभी मंत्रियों और सभी सदस्यों को कहता हूं, कोई भी माननीय सदस्य उठ भी जाए तो आप उनका जवाब मत दिया करो, मेरे बिना परमिशन। Thank you, Mr. Speaker, sir. So, as I said, our rate of renewable energy capacity addition has been the fastest in the world. It's not me saying it. The whole world says it. We have emerged as the most attractive destination for investment in renewables. This is not me saying. This is the whole world saying it. And this is something which has happened by, shall we say, a consensus. Now, in many countries, you will find that there is not much of a consensus insofar as energy transition is concerned. Many developed countries, there is no consensus. In our country, there is a consensus. ये हमारे देश में सभी लोग, सभी राज्य इस बात पर सहमत हैं कि हाँ साहब, सो हमें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगानी चाहिए, हमको एनर्जी ट्रांजिशन करना है, हमको अपने एमिशंस कम करना है। एक एनडीसी तो जैसे कि हमने कहा कि वी अचीव 9 years in advance। दूसरा एनडीसी हमने प्लेज किया था पेरिस में, ये 2 प्लेज किए थे। एक तो कि हम साहब 2030 तक अपना कैपेसिटी जो है पावर जनरेशन कैपेसिटी उसका 40% हम कर देंगे नॉन फॉसिल से, वो हमने 21 में कर दिया। दूसरा हमने कहा था कि हम अपने एमिशंस इंटेंसिटी को घटाएंगे एज अगेंस्ट 2005 लेवल्स बाय 33 to 35% बाय 2030। ऑलरेडी हमारा जो अचीवमेंट है इट्स नियरिंग 30, तो उसका भी हम बिफोर टाइम हम लोग अचीव कर देंगे। आइए सब लोगों के ये सहमति से हुआ। हमारी ये बात हो रही थी अबाउट मिसिंग टारगेट्स। मिसिंग टारगेट्स, we are ahead of the target. Please be proud of it. The whole world understands this and accepts this. We are ahead of the target. Forget about missing targets. That is one thing which we have done. We can be proud of in the energy sector. Now, basically, people talked about the achievement of the Bureau of, and you know how the Bureau of Energy Efficiency has fallen short of its utilization of its budget. The purpose is not to not cent% spending the money. The purpose is that have you achieved what you have set out to achieve, and they have. As I said, हमारा जो emissions reduction हुआ है, that is because of the Bureau of Energy Efficiency. कैसे emissions reduction हुआ? हम लोगों ने इंडस्ट्री में अपना CO2 का emissions, ये परफॉर्म अचीव ट्रेड हमारा स्कीम, उसके अंतर्गत हमने emissions reduction यानी Bureau of Energy Efficiency ने emissions reduction अचीव किया of 106 million tons of CO2 per annum। हर साल उतना हम लोगों ने जो स्टेप्स किया है उसका एफिशिएंसी जो बढ़ा है, बहुत सारे सेक्टर्स में उसके जो ये एनर्जी यूटिलाइजेशन का जो एफिशिएंसी है वो 20% से लेकर के 24% तक बढ़ा है। और इसी कारण हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो गए दुनिया में। जितने मेजर इंडस्ट्रीज है दे बिकम कॉम्पिटिटिव बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। और जो इन्होंने टारगेट सेट किया उसे कारण हुआ। ये सिर्फ इंडस्ट्री में 106 मिलियन टन ऑफ CO2 एमिशंस रिडक्शन पर एनम, हम पूरा ये आपको बता ही देते हैं कि कैसे कैसे इनका ये अचीवमेंट रहा। इनका जो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम है उसमें CO2 एमिशंस रिडक्शन 51 मिलियन टन पर एनम रहा। जो उजाला स्कीम है, जो हमारा ये LED स्कीम है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने एनर्जी सेविंग अचीव की 129 बिलियन यूनिट्स, 129 बिलियन यूनिट्स एनर्जी सेविंग की। हमारा टोटल कंजम्पशन आज है 1400 बिलियन यूनिट। जो हमारा उजाला स्कीम है इसके अंतर्गत CO2 एमिशंस का रिडक्शन हमने 105 मिलियन टन पर एनम किया। इसी कारण जो हमने जो टारगेट दिया था कि बाय 2030 हम अपना एमिशंस रिडक्शन कर देंगे बाय 33 to 35%, इसी कारण तो हम अचीव कर रहे हैं। और जो हमने अपना एम्बिशन बढ़ा दिया, क्योंकि हम जो पहले टारगेट हमने अपने आप के लिए दिया था पेरिस में 2015 में, वो हम अचीव कर लिए। और तो हमने ग्लासगो में अपना टारगेट 2030 का बढ़ा दिया और हमने कहा कि 2030 तक हमारा जो ये कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, उसको हम 50% ले जाएंगे, 40% से 50%। और जो एमिशंस रिडक्शन है उसको हम 33% से बढ़ा करके 45% कर देंगे।
क्यों कर रहे हैं? We are the only country which has increased, our target by this much. No other major economy has done that. We have done it because we not only achieved our target, but but honourable members, we achieved our target before time. So the honourable member who said that we don't achieve our target, they are not aware of the facts. We have achieved our target before time. That's why we enhanced our targets for 2030, and we shall achieve those. Don't worry. As I said, now one question, of course, was that we have reduced the pledge which was made by the honourable Prime Minister in Glasgow. The honourable Prime Minister had made a pledge that by 2030 we shall install 500 gigawatts of non-fossil fuel capacity. We stand by that. But as far as NDCs are concerned, the language of NDC is different. जो NDC एक हमने जैसे कि कहा था कि by 2022 हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 1,75,000 मेगावाट करेंगे, तो ये वो हमारा प्लेस था, लेकिन वो NDC नहीं थी. NDC जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता है, वो परसेंटेज टर्म्स में होता है. तो परसेंटेज टर्म्स में हमने कहा था कि हमारी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी वो 40% हम ये रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, बाय नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे. इसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल नहीं होता है अध्यक्ष महोदय, उसमें फॉसिल नॉन फॉसिल होता है. नॉन फॉसिल से एमिशन नहीं होता है, फॉसिल से एमिशन होता है, तो फॉसिल नॉन फॉसिल होता है. तो रिन्यूएबल एनर्जी उसमें नहीं आती है, नॉन फॉसिल होता है, जिसमें कि रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर रहता है. तो हमने कहा था कि नॉन फॉसिल से हमारा कैपेसिटी होगा बाय 40% बाय 2030, जो कि हम 21 नवंबर में अचीव कर लिए. अब उसी को बढ़ा करके हमने 40% को 50% कर दिया. इसमें एब्सोल्यूट टर्म्स में 500 गीगावाट या 450 गीगावाट की बात नहीं कही जाती. तो व्हाट यू रेड इन द न्यूज़पेपर्स वाज एक्चुअली द प्लेज being translated into action in terms of the United Nations framework on climate change. That is the language which is followed. And similarly, the other language which is followed is emissions intensity, which we have again increased our ambition from 33% to 45%. So our progress in renewable energy, our progress in energy transition is something to be proud of. I am proud of it. Every Indian can be proud of it, because we have done something which other major economies have not done, and despite the fact that our per capita emissions are the lowest in the world. Why did we do it? Why did we do it? Because we believe in it. And not only the government, I believe every Indian believes in the environment. We are the only society which worships nature, which worships trees, which worships water. We are the only society which worships the sun, the giver of energy. So therefore we believe in it. We believe in the energy, the conservation, we believe in the environment. And that's why we are doing this. Now the set of amendments which we have brought before you, this will take that forward. This will take that forward. And the world is, as I said, Honourable Speaker, that the world is changing. Now, every country has realized that it is necessary to take action, otherwise this global warming will damage our environment irreversibly. And every country therefore is taking steps. Now let's say that we had not brought this bill. You know what is going to happen? The European Union has already decided that they will levy a carbon tax on steel which is not green, on import of steel which is not green. So if we don't convert our industry will not be competitive. It will not be able to sell in the foreign markets. That's how the world is changing. They are going to put carbon tax on every product which we try to export, or if we don't make those products green products. The future is going to be green products. That is one. The second, of course, is the fact that this is our golden opportunity to change from being a net importer of energy to being a net exporter of energy. Honourable Speaker, sir, we have all the advantages. We have one of the largest established renewable energy capacities in the world, and we have trained manpower, we have the land, we have the sun, so we can emerge as the global supplier for green hydrogen and green ammonia. Now that is going to be the future. And different countries, European countries as well, the developed economies have already started tying up sources of green hydrogen and green ammonia. We are missing the bus. Now we can't afford to miss the bus this time. We missed the bus when the Industrial Revolution took place. This time we shall not miss the bus. We shall emerge as exporters of green hydrogen and green ammonia. I am happy that many of our industries we've already come out with a policy to sort of facilitate production of green hydrogen and green ammonia, and I'm happy that many industries have gone abroad and tied up
for export of green hydrogen and green ammonia from our country to those countries which need it, like Japan, European Union, etc. Now that's what our objective is. Our objective is twofold. One objective is that we shall green our industry. That is one. And that is for the environment, and that's also for removing our dependence on imported sources. For Honorable Speaker, sir, we import 9.1 million tons of urea. Why? Because we don't produce natural gas, so we have, and we also import ammonia, grey ammonia. We import natural gas, and then after that we make the ammonia from that to make fertilizer. Now we will sort of do away with our dependence on imports, and we shall make green ammonia here from the sun and our solar energy and wind energy. Similarly, whether in fertilizer, similarly in the refining, petroleum refining, or wherever we use feedstock, we are going to shift from imported feedstock to indigenous feedstock made from renewable energy. Now this is something which we are going to be world leaders in. This is the future, and we shall emerge as world leaders in. These amendments will facilitate that. That's why we have said, we have put an enabling provision in the amendments that we will prescribe the replacement of imported sources, fossil fuel sources, by renewable sources or non-fossil sources made in India. That's why we have provided for the carbon market. Now questions were raised about the carbon market. Now we already have some species of a carbon market. Honorable Speaker, sir, we have already our industries, making sure that our industries become efficient. We've already started putting limits for energy efficiency, the specific energy consumption limits we put under the Energy Conservation Act. And if any industry achieves a higher efficiency than the limit which we put, we give him a energy saving certificate, which he can sell to other industries which also have a target, but which have not been managed to meet their efficiency, energy efficiency target. So they have to either buy this or pay a penalty. So we already have a species of a carbon market. For example, even in renewable energy, if an obligated entity puts more renewable energy or consumes more renewable energy than it's obligated to do, it gets a renewable energy certificate, which can be bought by other obligated entities which have an obligation to consume renewable energy but have not been able to meet that target. They can avoid paying a penalty by buying RECs. Now the carbon credit scheme will combine all these into one instrument. Now one more thing I would like to tell the House. Now these carbon credits are not going to be exported. No question. The carbon credits, and we are very conscious about it. I'll tell you why carbon credits are not going to be exported. Because we have made commitments in COP21, COP26, we have made commitments about our NDCs. Now till so long as we do not meet those commitments, we shall not allow any export of carbon credits. Those carbon credits will have to be bought by domestic industries, generated by domestic industries, bought by domestic industries. What that will do is, right now, and I'll explain the logic behind it. The logic behind it is this, that if a target is fixed on somebody to reduce its emissions or to reduce its carbon content, and it's not able to meet the target, let me just finish. And if it's not able to meet its target, then it has to pay a penalty. Now, but there has to, the system of penalties is there, but there also has to be a system for giving incentive. Suppose I not only meet the target, but I overachieve the target. What is the incentive? The incentive is that I will get carbon credits, which I can sell. So this incentivizes, in our country, this incentivizes energy transition. And the industries or obligated entities which are not able to meet their targets of reducing their carbon emissions, they will have to buy carbon credits or pay penalties. Now that is the construct. That is a construct which is already there. We are only combining it and making it clear. And all these, now, there was some discussion about the domestic, bringing residential buildings into the fold of, bringing residential buildings into the fold of this act. Honorable Speaker, sir, we are only bringing in large residential buildings. That means residential buildings which have a connected load of more than 100 kilowatts. A normal middle class house would have a connected load of 3 kilowatts. I am talking about
buildings which have more than, which are larger than 35,000 to 40,000 square feet. Only those buildings will be mandated to become green buildings and sustainable buildings. Now that is again a part of our energy conservation and energy efficiency, and that is possible. Now what we do is, we lay down the codes. We say that, okay, if you construct a large building, these are the rules which you will have to follow. This is what we will have to do. Now those codes are made a part of the building code of the state. So the state absorbs it in its building bylaws, and it is implemented as a part of the building bylaws. So the states implement it. All the implementation is done by the states, by the designated agency of the states. Now this bill also provides for providing finances and resources to the designated agencies of the state. That's what this bill does. So these are the I mean, by and large, it has been welcomed by everybody. This is a bill for the future. And, Honorable Speaker, sir, I would recommend it to the House that this may be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, संसद संख्या 11। Yes, sir. Sir, my amendment to clause 2 of the bill, I would like to know from the Honorable Minister, I fully heard your reply and response, that it is mandatory on the part of industry and all establishments to abide by the carbon emission. One industry is not able to comply the direction. No, yeah, no more. So I am not, sir, one second. No, 2 पर बोलना आप, अभी 11 चल रहा है. Class 2 में I am moving the amendments, sir. I am moving the amendments and seeking a clarification. प्रश्न ये कि N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 12। सर, संसद संख्या 12। Yes, I am moving, sir. I am moving. प्रश्न है कि N.K. प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सोगत राय जी, संशोधन संख्या 22। माननीय सदस्य खड़े होकर बोला करो, बैठ कर मत बोला करो। सर, नॉट मूविंग, ये ठीक बोला आपने। आजकल आप थोड़ा अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। श्री A. हमारी संशोधन संख्या 1 और 2। नॉट मूविंग। मूविंग। नॉट मूविंग। ओके। श्री M.K. राघवन, संशोधन संख्या 3। श्री K. सुरेश, संशोधन संख्या 13-14। श्री N.K. प्रेमचंद्र, संशोधन संख्या 15। नॉट मूविंग, सर। श्री बेनी बनन, संशोधन संख्या 23। मूविंग। श्री सोगत राय जी, संशोधन संख्या 24 से 27। सर, मूविंग इन पेज 3। प्रश्न है कि श्री सोगत राय द्वारा बोलने दीजिए, अमेंडमेंट तो मूव करे। सर, इन पेज 3 फॉर लाइन्स 33 to 36, substitute one expert in power sector and the principal secretary of the Ministry of Power, or if there is no principal secretary, the secretary in charge of Ministry of Power, and one official each from the power department of the major states, including West Bengal, to be appointed by the central government. As it is, he has formed a very omnibus and cluttered Bureau of Energy Efficiency. I think it should be less bureaucratic. प्रश्न है कि श्री सोगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 से 27 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ
कहें, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न 1 के खंड 3 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 विधेयक का अंग बने। श्री M.K. राघवन जी, श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 16। Sir, census संख्या 16, Bureau of Energy Efficiency authorized any agency in the country, not outside the country. Let the companies be inside the country. Domestic companies may be authorized. Foreign companies have to be omitted. That is my amendment. Moving, sir. प्रश्न 1 कि श्री N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न 1 की खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बना। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 17 से 2020। All the amendments are relating to extension of period. I am moving, sir. प्रश्न ये कि N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 से 20 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुए। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 28 और 29। Not moving, sir. प्रश्न 1 के खंड 6 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 6 विधेयक का अंग बना। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 21। Sir, last amendment, that is any agency, let it be any competent agency. It's a positive amendment. Can very well accept it if the honorable minister decides. I am moving, sir. प्रश्न है कि श्री N.K. प्रेमचंद्र द्वारा संशोधन संख्या 21 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न 1 के खंड 7 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 7 विधेयक का अंग बना। श्री M.K. राघवन जी, संशोधन संख्या 5। फिर माननीय सदस्य, एक बार माननीय सदस्य में व्यवस्था दे दूं, ये वोट वॉइस वोट होते हैं, इसलिए हाथ खड़ा करने की तकलीफ मत करो। आप मुंह से भी बोल सकते हो। प्रश्न है कि 8 और 9 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बना। श्री M.K. राघवन जी, श्री रितेश पांडे, संशोधन संख्या 30। To move this amendment. In place, I'd like to add, after page 6, line 12, provided that the appropriate government shall financially support through its various program policies and subsidies, or by arranging a mechanism through which appropriate loans for individuals, communities, public buildings, residences, companies, commerce, industries, and agriculture units that intend to buy equipment or necessary infrastructure for using renewable energy for the purpose of personal consumption. प्रश्न है कि श्री रितेश पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 10 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 10 विधेयक का अंग बना। श्री M.K. राघवन, श्री रितेश पांडे, संशोधन संख्या 31। Sir, I'd like to move this amendment, but quickly एक छोटा सा। Okay, no. Sir, एक मिनट। प्रश्न है कि श्री रितेश पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न खंड 11 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में खंड 11 विधेयक का अंग बना। श्री M.K. राघवन, प्रश्न के खंड 12 से 18 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 12 से 18 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I beg to move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 25, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र संशोधन विधेयक 2022। माननीय मंत्री जी, मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि अपने वक्तव्यों को संक्षिप्त करें। 5:15 पर मंत्री जी वक्तव्य देंगे और 5:30 बजे मैं अपनी बात को कहूंगा। Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill further to amend the New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022 as introduced in the Lok Sabha on 5th August 2022 be taken into consideration. कुछ बोलेंगे आप इस विषय पे? Sir, I am moving this amendment bill with the intention of having a world-class arbitration center in India. In 2009, we all are aware that we had passed the New Delhi International Arbitration Act, and after that, we had already established this said center on 13 Please, June the House be in order, please. 2022. Please. And in this regard, we have started the process of the appointment of chairperson. In the meantime, as the situation is dynamic and we see the situation globally, we felt that an amendment is very important to ensure that the objective of the act which we have passed is taken to its logical end. In the process, we are today making a very, very short amendment, and the proposal of today's amendment is: 1, the name of New Delhi International Arbitration Center be changed to India International Arbitration Center, and 2, enable the New Delhi International Arbitration Center to specify by regulations the manner of its discharge of various functions. So, sir, as the Honourable Speaker has given a very limited time, I would be responding to the queries and observations made by the honourable members. So I would like to explain whatever is possible in detail while I respond to the debate of this discussion. I would like to request the honourable member, this is a very, very specific bill with a specific objective to ensure that India becomes an international hub of arbitration. As the country is growing, we would like our business to grow, and in the process, the support and the views of all the honourable members are important. So, without any much objection, I expect that all the members would support this bill unanimously. Thank you, sir. Yes, thank you very much, ministers. Now, Sri Amar Singh to open the discussion. Thank you, sir. Be very brief. Be very brief. I will be very brief, sir. I will be very brief, sir. Very brief. Chairman, sir, as Honorable Minister has explained, that there is amendment in the 2019 Act to, 1, change the name of New Delhi International Arbitration Center to India International Arbitration Center. The second is, there is an amendment in the section 15, I think, that all the rules, the regulation would be framed how to run it. Now, arbitration is a very good alternative method of
disposal of the cases or disputes, or you can say dispute resolution. It's a very good method. And it has been going on in this country since ancient times. I mean, before independence, British era, even before that, our panchayats, our elders, all used to do it. Britishers tried to bring law in 1889 and 1940. Then Government of India also brought one law in 1995. That was also establishment of International Center. And now in 19, this New Delhi International Arbitration Center. Sir, we all support arbitration center and alternative disposal of resolution of disputes between the parties. That principally it's a very good thing. But the question is, which I think has not been addressed in the amendment, we all know what has happened over the last 75 years, or even before that. Sir, you yourself, your government, formed the Shri Krishna committee. That committee gave the report. Before that, there were two Supreme Court very strong judgments in 1989 and 2009. And the 2009 Supreme Court judgment, Union of India versus Singh Builders Syndicate, they say that there is a very, very unfortunate delays, high cost, frequent and sometimes unwarranted judicial interruptions at different stages of are seriously hindering the growth of arbitration in India. That is a Supreme Court judgment. And this was 2009. Shri Krishna report also tells us the same thing, because we don't have statutory backup. There is lack of experts in the country. Generally, the arbitration tribunals don't stick to the cap on time for disposal of the cases. And various departments in Government of India and state governments, they appoint their own officers as arbitrators. That leads to litigation. And contrary to the belief that arbitration perhaps is the end of the issue, unfortunately, because in India, because the law, the order is not mandatory, it's not binding, so people can still go for appeals. Appeal, and unfortunately in this country, we all know there are over 4 crore cases pending in various courts in the country. Sir, you are a law minister. You would be knowing much more than me. So we have to bring some end to the litigation and to the arbitration. We are supporting everything, but 2-3 suggestions which I want to make. At least some certain legal or civil disputes could have been only delegated to this India International Center. There should be some clause in the law that the order would be mandatory, or there would be 1 or 2 appeals to High Court or Supreme Court. The litigation can't go on, because there is no binding and you are keeping it still open. And 1995 International Center, there were 3 centers already working in the country, Bombay, Delhi, and there is another center. Not many results are coming. People are preferring Singapore Center, International Center. Why are they preferring? Because the orders are mandatory. And international experts are sitting on those tribunals. And the disposal is quite quick.
Even Indian businessmen, Indian corporates, they are all going to Singapore for their disposal. But we are not touching those issues because of which people are going outside the country. People are going to Paris, people are going to London. Your intention is very good, but I don't find anything in the amendment which would lead to really solid results in the country. That is what my point is. Because we cannot, the name changing is good. India International Center would give some, New Delhi could have given a city-centric impression. That's good. But what happens to the orders? There is no finality of the order. There is no time limit. 60 days you have given in the act, but no order is passed in 60 days. What is the provision to finish it in 60 or 70 or whatever days? I mean, there are so many practical problems in the arbitration issue. Unless we take up all those issues, simply changing the names, I don't think, and especially in dispute resolution, it is the weaker sections of the society. It is the people with lesser money. I mean, not the big corporate, smaller MSME, all those people. These are the people who are the sufferers because they can't afford the. I mean, those lawyers which go to London and to Singapore. So please bring this law again. Thank you. And bring those amendments which are really needed to make this law effective. Thank you, sir. Thank you very much. Now, Ramesh Bidudi ji. धन्यवाद सर। प्लीज वेरी ब्रीफ। मैं बहुत ब्रीफ बोलूंगा सर। आपने मुझे एक ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता वाले स्टेप को जो हमारे कानून मंत्री जी के द्वारा रिजिजू उठाया गया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अब वो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। 1952 से सरकारें चल रही हैं, 60 साल तक। मैं अमरजीत जी को सुन रहा था बड़े ध्यान से। जुडिशरी जिस प्रकार से मजबूत होनी चाहिए थी, वो मजबूत नहीं हुई। अगर जुडिशरी मजबूत होती तो हमारे देश के अंदर आज भी 2 करोड़ अदालतों में केस लंबित पड़े हुए हैं। और ये आर्बिट्रेशन के जो मामले होते हैं, ये जुडिशरी के होते हैं और दूसरे उसके होते हैं सिविल के, जो क्रिमिनल वगैरह नहीं होते। इन केसों को लोगों को समाप्त करने के लिए 10-10, 15-15 साल तक अदालतों में धक्के खाना पड़ रहा है जी। आर्बिट्रेशन के माध्यम से ये केस सॉर्ट आउट हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के तहत विश्व का केंद्र एक आज दुनिया बन रही है और इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, जैसे भी दोहराया भी था अमरजीत जी ने, हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भी कंट्री में और भी कंट्री, उनको सिंगापुर जाना पड़ता है। उसके पीछे कारण क्या रहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जुडिशरी को देना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो जो जगह मिलनी चाहिए थी वो लंबे समय तक नहीं दे पाई। और इसका नाम न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के नाम से लोग समझते होंगे ये दिल्ली के या राज्य के ही आर्बिट्रेशन के मामलों को निपटाने के लिए सक्षम होगा। एक साइकोलॉजी भी इंटरनेशनल लेवल के लोगों पर इसका फर्क पड़ता होगा सर। हमारे देश में लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूशन, ये 3 संस्थाओं के द्वारा लोकतंत्र की संचालना होती है। 1980 का अगर दशक याद करें तो वो काला अध्याय कहा जाएगा कि 1980 के दशक में जब अदालतों को अपने हाथ में काबू करने का प्रयास किया, तब की प्रधानमंत्री जी ने, और जो मेरिट है, मेरिट से छोड़कर जूनियर अपने चहेते ऐसे लोगों को, अभी भी जो देश में शोर मचा था, रिवार्ड वापसी गैंग बहुत सक्रिय हुआ था, वो उन्हीं प्रकार की सरकारों के द्वारा ऑब्लाइज करे हुए लोगों को वो एहसान उतारने के लिए रिवार्ड वापस कर रहे थे। वो सब लोग, सारे के सारे लोग, ऐसे लोगों को जब ये उनकी जूनियर लोगों को सीनियर के ऊपर जज बनाने का मामला आया तो जुडिशरी को 1993 में आदेश करना पड़ा और उस आदेश के तहत ये जज भी अब हम ही अपॉइंट करेंगे और लोकतांत्रिक पद्धति को 1980 में धक्का लगा।
आज मैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार ऐसे राज्यों की अगर बात करूं, वहां पर जजों के पास उनके कानून जो मुकदमे लड़ रहे हैं, उन मुकदमों को निपटाने के लिए चाहे हम बात करें उनके स्टाफ है, चाहे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, वो पूरे के पूरे नहीं। आज भी जजों के कई अदालतों में देखेंगे, राज्यों में जाकर एसी तक उनके दफ्तरों में नहीं है। इसके कारण से ये जो सिविल मैटर है और ये आर्बिट्रेशन के माध्यम से निपटाए जाए और वो जल्द तरीके से निपटाए जाए, इसलिए इसका नाम बदलकर जो रखा गया वो मैं बाद में आऊंगा सर। लेकिन आर्बिट्रेशन क्यों लाया गया, आर्बिट्रेटर की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारी जो अदालतें हैं वो अदालतें समय पर लोगों को उनको न्याय देने में सक्षम नहीं थी, और इससे एक मैसेज चला गया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस एनर्ड, कि जो जस्टिस डिनाइड, कि जो जस्टिस डिले हो रहे हैं तो लोग ये समझ के बैठ जाते थे कि 10 साल 15 साल हो गए और 15 साल के भी अगर मुझे न्याय मिला तो ना के बराबर ही हो गया वो न्याय। ऐसी स्थिति देश में लंबे समय तक ये बनी रही, और इसके जिम्मेवार कौन है ये भी पूरा देश जानता है। 66 वर्ष तक राज करने वाले लोग इसके जिम्मेवार है सर। जुडिशरी को किसी भी प्रकार से वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हुई, तो आर्बिट्रेशन भी जब 1995-96 में बनाया गया, उससे पहले तो लगातार इतने लंबे समय तक 1940 का अंग्रेजों का बनाया आर्बिट्रेटर कानून चल रहा था देश के अंदर। नहीं सर, मुझे 5 मिनट बोलने दीजिए सर। 5 मिनट हो गया? नहीं सर, 5 मिनट में और मांग रहा हूँ आपसे सर। नहीं, तो मेरी और पार्टी के लोगों का टाइम मुझे दे दीजिए। ये पार्टी का तो इसीलिए जो मैं कह रहा था कि स्टेनोग्राफर, टाइपराइटर, इनकी व्यवस्था न होने के कारण से हम लोगों को जो वरीयता के आधार पर जिसका व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए उनके सिविल मैटरों के अंदर, वो नहीं मिल पा रहा था सर। इसीलिए इसका नाम बदलकर अब मैं असली पॉइंट पर आता हूं कि इसको इंडिया इंटरनेशनल नाम रखने का इसका लॉजिक क्या रहा होगा। ये मैंने जैसे दोहराना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल नाम से भारत में अगर बनेगा, भारत में जैसे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर अब 24 सेक्टर द्वारका में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, जहां भारत के 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके डिस्प्यूट होते हैं वो सॉर्ट आउट कराने के लिए क्यों सिंगापुर जाए, क्यों लंदन जाए, और बाहर की कंपनी क्यों ना इंडिया में आए। सर मुझे 1 मिनट और दे दिया, वो क्यों ना इंडिया में आए। अगर वो लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंटरनेशनल का नाम पूरी दुनिया में जाएगा, तो ग्लोबलाइजेशन के तहत वो बड़ी कंपनियां अगर अपने आर्बिट्रेटर, क्योंकि 2 पक्षों में झगड़ा होता है, आर्बिट्रेशन के अंदर एक जज उसके अनुसार हो, एक अनुसार हो, एक तीसरे के अनुसार हो, ये व्यवस्था होती है, तीनों मिलकर उस समस्या को सुलझा ले। और अगर वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ हमारे यहाँ के लोगों को, चाहे होटल के मामले में हो, चाहे वो कार ड्राइविंग एयरपोर्ट के मामले में हो, बाहर की इकोनॉमी हमारे देश में आएगी। बाहर के लोग सिंगापुर अगर न्याय देने के लिए भारत की जो क्रेडिबिलिटी दुनिया में बढ़ रही है, उसके अनुसार भारत में आने के लिए लोग प्रयास करेंगे, जिसके कारण से यहाँ पर इसको हमारे भारत के अंदर इकोनॉमी के आधार पर भी, अर्थव्यवस्था के आधार पर भी बाहर की मुद्रा हमें अच्छी खासी संख्या में मिलेगी। तो इसीलिए जो माननीय कानून मंत्री जी ने इस कानून को लाने की बात कही है, इसके लिए मैं एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि आर्बिट्रेशन के अंदर भी जो मुकदमे चल रहे हैं, जो लंबित पड़े रहते हैं, वो टाइम बाउंड कम से कम होने चाहिए, कि जब जो मुकदमे अगर अदालतों के द्वारा आर्बिट्रेशन को ट्रांसफर कर दिए गए, आर्बिट्रेशन के अंदर लंबे समय तक तो लटकते रहते हैं आर्बिट्रेटरों के माध्यम से, तो कम से कम आर्बिट्रेशन के मुकदमे वो समय सीमा में। धन्यवाद। सौगत राय जी। Sir, I shall be very brief. There is something known as superfluous legislation. जो legislation का कोई दरकार नहीं है. This is such a legislation. This government does not know its mind. In 2019, Ravi Shankar Prasad, who is now member of this house, was Minister for Law. He converted the name of International Center of Alternative Dispute Resolution into New Delhi International Arbitration Center in Delhi. Now, Mr. Rijiju, who is now the law minister, though he is not a practicing lawyer himself, unlike Ravi Shankar Prasad, wants to leave his stamp on the ministry. So he has called this International Arbitration Center Act.
the main moot question is simply this, that there is neither any objection nor any support, because as I said, it's a superfluous legislation. Has the government been able to make India a center of arbitration? Singapore is such a small place, city-state. You see, most of the companies go for international arbitration to Singapore, including the Ambanis, Adanis. They have got international connections and they go to Singapore. Why the government has not made any progress in last 3 years to make New Delhi a major center of arbitration? Because arbitration is an alternative way. In our country, courts take years and years. Courts are only there to benefit lawyers, not the litigants. So arbitration is a shorter form, though whether it's perfect law or not, I don't know, because they make one retired judge arbitrator. And judges as arbitrators make more money than they used to make at judges. Please. And ultimately, when the arbitration award comes, as salary, arbitration award. When the arbitration award comes, then somebody goes again in litigation to court. He is professor and lawyer both. So I would like to know from the Honorable Minister, you are changing a name, it's all right, you will leave your stamp on the ministry. But what is it that the government is doing to make India a better center for international arbitration? Thank you. Which are the companies that are there? Now, there are big law firms in this country, Khaitan and Company, this, that, Amarchand, Mangaldas. These are all there, people go to them. But none of the top international law firms have set up big offices in India. And our big lawyers have gone abroad. Harish Salve, who often pleads for this government, stays in London and sometimes does his pleading through video messaging. So I would like the minister really to develop this arbitration. As an alternative, it will reduce the burden on the courts. It will give quick relief to litigants. Yes, thank you. So with that I say that I have nothing to say either in favor of the bill nor against the bill. Thank you, It's a Dr. superfluous Kalamuthi legislation. Veeraswamiji. It should be dealt with as such. Thank you, sir. Thank you. Sir, thank you very much, sir. Thank you for giving me an opportunity to speak on this New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022. Sir, there is no doubt that we require a bill of such nature, sir. We definitely need an international arbitration center in India, because right now the number of disputes that exist, all these disputes, which goes into several thousands of crores, is being heard in Singapore because we do not have a robust arbitration mechanism in India, sir. Sir, in fact, this bill was actually brought in 2019, and in that bill, they had said that the Act will allow the central government to provide for removing any difficulty in implementing the Act up to 2 years. Sir, after 2 years, from 2019, within 3 years, they have found that they have had several difficult drafting errors in this Act. So when you are preparing a bill, the lackadaisical manner in which they have been preparing bills has already been referred to by the Supreme Court Chief Justice, sir. He has said that the Parliament is passing bills without taking into consideration about the complete details, where there is not adequate amount of debates happening, or referring it to the standing committees to make sure that the bill has all the provisions which need to be taken into consideration, because the Supreme Court CJI, he has mentioned that passing bills without all these considerations creates a havoc in the judicial system, sir. The judges are facing immense trouble in interpreting these bills, and subsequently we come back. It is very sad to note that a bill which was brought in 2019, within 3 years, you want to bring an amendment to this. Can't we even prepare a bill which can last for at least a few decades before you want to seek an amendment? And similarly, the same way that it was seen, we have seen that the problems with the farm bills and so many other bills which the government has brought in without taking into consideration the opposition voices or the voices of the people.
So I request that this government may take adequate time to ensure that all the provisions are contained in this bill, sir. Sir, in this bill, we are not talking about any provision. You are talking only about the international arbitration, where these things can last for several thousand crores. But there are so many companies which have disputes which can be much meager, sir. It can be about 50 crores or 10 crores, who cannot afford to go to these kind of centers. So I would request some kind of an arbitration provision can be provided to those people also. And similarly, when we are asking people to keep shifting from Chennai to Delhi every time, the traveling and everything is becoming a problem. In fact, our Honorable Chief Minister also asked for Supreme Court bench to be placed in Chennai, sir. So I would request that the Law Minister to kindly consider that, so that bench is made available in Chennai, and if possible in all the regions, sir, in Calcutta and Mumbai also. And similarly, we wish that there can be a provision for virtual arguments. I mean, like where now during the pandemic, we have found that several courts have been functioning where they have been functioning virtually. This can be taken into a definite positive aspect for the Law Ministry to consider. Thank you very much. Shri Lav Krishna ji, Lav Shri Krishna. Thank you, sir. Thanks for allowing me to speak on New Delhi International Arbitration Center Bill. As Saugata Roy said, there's not much in this, just the change of the name of the bill, name of the center. Sir, this is I believe this is the second time or third time that we are speaking something about arbitration in the last 3 years, sir. But again and again we will be speaking about it, but somehow the arbitration center doesn't come up in Delhi. No business happen in Delhi, but the arbitration actually happens either in London or in Singapore. So even the best of the minds, best of the lawyers, best of them are going and practicing overseas, but are not coming to Delhi and doing it, sir. So yes, we totally support this bill, that change of the name and everything. But sir, arbitration as it is that we are speaking right now, we are only talking about the higher level, wherein between the corporates and everything, sir. But last time also I spoke about it. It is not just with the corporate level arbitration that is required in this country, sir. With the amount of cases that are pending in this country, there needs to be a thinking. As Kiran Rijiju is a very forward-thinking minister, there should be a thought that should be there, wherein we can have some arbitration at a lower level, so that these pending cases are dealt at that level itself. Say we have local adalat and all those institutes that are there, but they don't have enough power. That is, they don't have enough power to actually do these arbitrations at the lower level. So that's why most of the pendency is being there at the district courts and the high courts, sir. So with that, we support the bill, but we want to see some sort of activity happening in Delhi, sir. Thank you very much. Thank you very much, Shri Danish Eliji. Thank you very much, Honorable Chairperson, sir. कि आपने मुझे न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2020 पर बोलने का मौका दिया। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आर्बिट्रेशन अगर करना है तो पहले हमारा जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से करोड़ों की तादाद में केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, और उसके लिए सरकार को जो करना चाहिए नहीं कर पा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर, कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट बने हुए एक डेकेड से ज्यादा हो गया, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बिल्डिंग नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को क्रिएट करना है। हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई दशकों से मांग है, आज तक नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना मिलता है। आर्बिट्रेशन सेंटर, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर दिल्ली में बने, नो डाउट बनना चाहिए, लेकिन यहां भी क्या हो रहा है सर, आजकल मैं माफी के साथ चाहूंगा कि जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, मतलब आपदा में अवसर तलाश लिया गया। माफ कीजिए, मैं माननीय लॉ मंत्री जी से कहूंगा कि जो बड़े लॉयर्स हैं वो तो लंदन में भी बैठ के, दूसरे कंट्रीज में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है काम कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे यहां पर हैं उनको ये कहां का, मतलब मुझे नहीं, क्योंकि आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन सच्चाई ये है कि जो गरीब आदमी हैं
उसको न्याय मिलना इतना मुश्किल है आज की डेट में कि वो नहीं हायर कर सकता बड़े लॉयर्स। जो किसान की समस्या है, जो गरीब की समस्या है, जो मान लीजिए जो डेमोक्रेसी को बचाने की इस देश में कोशिश कर रहे हैं, जुबैर जैसे जर्नलिस्ट लोग या दूसरे जर्नलिस्ट जो उनको जेलों में रखा जाता, वो बड़े लॉयर हायर नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जुडिशियल सिस्टम के अंदर लॉ मिनिस्टर साहब को आर्बिट्रेशन अच्छे से करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन इंडिया में हो, उसके लिए हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमें अपने गिरबान में झांक के देखने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Thank you, sir. I stand here to just ask two very small questions to the Honorable Law Minister of India. He has brought in this bill. I can't believe he is just brought it to change the name. I mean, there's really nothing else. I mean, this is really lack of colossal waste of time for Parliament if you've just got it for that. I can't, it's just appalling. I have two questions to ask you. This is not for the common man. This is the new Delhi International Arbitration Center. So this is obviously for the big boys. Now, two questions that I need you to clarify to me. That a reply of Government of India in Rajya Sabha said the high network individuals of India are leaving India. My friend Pinaki Mishra also spoke at length last week about it, that most high network individuals are leaving this country and prefer a foreign passport over an Indian passport. Now that's point number one. Point number two is that a lot of my colleagues talked about all the big lawyers, the big boys who are lawyers who are leaving, prefer arbitration in England, they prefer to live in England. So there's not just all the big investors leaving, but even the brain drain, all the big lawyers are preferring to leave India. So have you ever thought of that for a moment, that here you're trying to make an international center, but the so-called creme de la creme of India, be it the intellectual lawyers, be it the industry, let's not take a socialist line, let's take for a moment a capitalist line which your government likes. So why are we making sure that all these people who create wealth in this country, create jobs in this wealth, are leaving this country? And give you two small examples. Look at KN Energy. This happened in your duration, as well as the Reliance British Petroleum issue, or the Amazon Future Group and the Reliance dispute. They have not chosen India as an option. Future Group is almost becoming an NP, unfortunately, which had one of the finest companies in this country. So why is a big company like Reliance chooses Singapore or Britain as an arbitration center, not as India? So why don't you introspect instead of bringing the law of just changing names to improve and strengthen the system? अपने कारबान में जाके देखो भैया, कुछ तो कम पड़ रहा है, इसीलिए तो सब जा रहे छोड़ के. It's very easy for all the jingoism that your government does, which is all wonderful. But if you are bringing an international center, your big boys, which are of this country, the big investors who you expect to be a part of this arbitration center, prefer Singapore, prefer India. So why are we wasting our time on this arbitration in India? So Thank please you. reply for this. Thank you, Supriya ji. Next, Sri Hanuman Beniwal ji. Sorry. Hasnain Masoodi ji. No, please. Masood ji. Thank you, sir. Sir, an efficient adjudicative mechanism has key role in promoting investment, industrial growth, and generation of employment and overall development. Sir, the investors, domestic and foreign, feel encouraged and confident to invest if they find that country has an efficient justice delivery mechanism. And the alternate dispute resolution mechanism has, over the years, emerged as the main source of key role in adjudication of the disputes. In that background, the bill is a right step in the right direction, because most of the honorable members have voiced the concern that why should people flock to other places for arbitration. It is because we did not have an efficient mechanism here in the country. And if the change itself may not convey much, but it does give an impression, or it does at least belie the impression that no, we don't have an efficient adjudicative mechanism or alternate dispute mechanism, arbitration in the country. And when people flock to, or people go to
Hong Kong, or people go to other Singapore, or go to other places. They go, or London, they go because there is a clause in the agreement, that jurisdiction at London. And why do they insist on it once they enter into an agreement with our investors or who collaborate with them? Because they say that we don't have an action mechanism in the country, or in dispute mechanism in the country. So we also readily agreed on it. Once we have in place an action mechanism, now, I mean, what is proposed by the Honorable Minister, and because Section 15 tells us that the center will facilitate arbitration. Once that is there, that argument or that plea will no more be available to our investors. And I think that this is the right step in the right direction. I stand. Thank you. Thank you, Shri Hanuman Beniwal ji. सभापति महोदय, आज राजस्थान के अंदर एक आस्था का जो केंद्र है खाटू श्याम जी, एक सेकंड साहब, उस मंदिर के प्रांगण में मंदिर के अंदर दर्शन को लेकर भगदड़ मच गई। लाखों लोग थे, इंटेलिजेंसी फेल थी वहां की, 3 लोगों की मौत हो गई, कई दर्जन लोग घायल हो गए। उसके अंदर मेरा निवेदन था कि अंदर टीम भेजे और वहाँ एक सीआई को सस्पेंड करके आप संदेश नहीं दे सकते। क्या है विषय, क्या है? एक सेकंड साहब, क्या है कांग्रेस की इसी सरकार, कांग्रेस की इसी सरकार में 2010 में मेहरानगढ़ के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए थे साहब। एक सेकंड, मेरा निवेदन, स्पीक ऑन द बिल। एक सेकंड, एक सेकंड, कांग्रेस की सरकार के अंदर मेहरानगढ़ सैकड़ों लोग मारे गए थे। मेरा निवेदन है, निवेदन सुनिए, बिल पे आ रहा हूँ साहब, बिल पे। You speak on the bill. बिल पे बोल रहा हूँ, आप बिल पे। Yes, please. बिल पे बोल रहे भाई। Nothing will be. आप लोग Yes, please. Yes. क्यों जबरदस्ती? Yes, please. एक सेकंड रुको था। Nothing. No, nothing. No. You please speak on the bill. मैं बिल पे ही बोल रहा हूँ। Honorable Speaker has given you permission to speak. No. That cannot be. That cannot be. No. मैं इनके खिलाफ नहीं, अजय रंजन जी आपके खिलाफ थोड़े बोल रहा हूँ, बैठो आप यार, कैसी बात? आपने आर्बिट्रेशन बिल से बोलो, आप आर्बिट्रेशन बिल से बोलो। वो मेरा सभापति जी, मेरा निवेदन है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। नहीं, प्लीज। निशिकांत दुबे जी। I've already given the. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए हुए इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ। मैं सुन रहा था सबों को सर, पिछले 75 साल में जो शिफ्ट हुआ है, माहौल जो इस देश का शिफ्ट हुआ है, उसमें इसकी कितनी आवश्यकता है। जब से हमने स्टार्ट किया 47 के बाद, तो लाइसेंस, परमिट और कोटा राज में चले गए सर। एक सर्टेन जो है बिजनेस हाउस ही बिजनेस कर सकता है, उसको सर्टेन सेगमेंट में लाइसेंस मिल सकता है, उसको परमिट मिल सकता है, कोटा मिल सकता है। मैं किसी के ऊपर ब्लेम देने के लिए नहीं खड़ा हुआ उसको। और दूसरा जो सरकार ने किया आजादी के बाद, कि सरकार को बिजनेस करना है। यदि स्टील बनाना है सरकार को बनाना है, सीमेंट बनाना है सरकार को बनाना है, कोई भी बिजनेस हो, कार बनाना है सरकार को बनाएगा, पिन बनाना है सरकार को। और 1-2 जो बिजनेसमैन थे जो कि लाइसेंस, परमिट, कोटा राज में थे। इस कारण से इस तरह के कोई डिस्प्यूट हमारे यहाँ नहीं डेवलप हुए। 1990 के बाद लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ और अब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। भारत सरकार ने एक पॉलिसी के तहत यह फैसला किया है और धीरे धीरे जो मुझे लग रहा है कि सारे बिजनेस सरकार खत्म कर देगी। और सरकार का जो बेसिक काम है, जो इस पार्लियामेंट का बेसिक काम है कानून बनाना, या सरकार का जो बेसिक काम है पॉलिसी में जाना, हमको लगता है कि 1-2 सेक्टर को छोड़कर मैक्सिमम जगह सरकार को वहीं जाना चाहिए। और यही पूरी दुनिया का रीत है। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो स्टार्ट किया इस देश में, एक नई क्रांति जो स्टार्ट की, तो उस कारण से इसकी आवश्यकता है। क्योंकि कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जबकि भारत का बिजनेसमैन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से लेके छोटे सेक्टर तक, स्मॉल स्केल सेक्टर से लेके बड़े सेक्टर तक, वो इन्वेस्टमेंट बाहर का नहीं आएगा या उसका बाहर का पार्टनर नहीं होगा। और जब यह सिचुएशन डेवलप होगा तो सारे डिस्प्यूट यदि वो बाहर होंगे, मान लीजिए बड़े बड़े लोग तो सिंगापुर चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, अमेरिका में डिस्प्यूट हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटे लोग हैं, उनके जो डिस्प्यूट होंगे, उस डिस्प्यूट के लिए शायद उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, उस एग्रीमेंट का वो पार्ट नहीं होगा। तो मेरा मंत्री जी से यह है कि आपने बहुत अच्छा बिल लाया है। मेरा एक छोटा सा सुझाव होगा कि जो ये कंपनियां एग्रीमेंट करती हैं दूसरे कंपनियों के साथ या दूसरे देश के साथ,
उसमें इस पॉइंट को जरूर जोड़ा जाना चाहिए कि कोई भी डिस्प्यूट यदि होता है तो वो डिस्प्यूट इंडिया के अंदर हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ये दिल्ली में जो हम ये डिस्प्यूट मैकेनिज्म बना, आर्बिट्रेशन सेंटर बना रहे हैं, यदि हम ये कर पाए तो जो लोगों के कंसर्न है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर के लोग जा रहे हैं, और हमने देखा भी है कि बड़े बड़े डिस्प्यूट में चाहे एंट्रिक्स देवास का मामला हो, चाहे वोडाफोन का सवाल हो, जिस किसी भी सरकार ने किया हो, उसके कारण हम लोगों को काफी नुकसान सहना पड़ा। और एयर इंडिया का तो ऐसा हो गया कि एयर इंडिया के सारे एसेट ही पूरे दुनिया भर में जब्त होने लगे एंट्रिक देवास के कारण। तो मुझे लगता है कि यदि उस एग्रीमेंट का पार्ट हम बना देंगे तो इसका फायदा हो पाएगा। और जिस चीज के लिए माननीय मोदी जी इस बिल को लेकर आए हैं, आप बिल को लेकर आए हैं, वो उसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट ऑनरेबल मिनिस्टर रेस्पॉन्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। जैसे मैंने प्रारंभ में अनुरोध किया उसी प्रकार से हमारे सदस्यों ने बहुत लंबा बात नहीं रखते हुए, और एक हिसाब से हम ये भी मान सकते हैं कि 100% मेंबर्स ने सपोर्ट किया है। इवन दादा भी, उन्होंने सपोर्ट शब्द इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उन्होंने भी सपोर्ट किया। ये हम उसका भाव को समझ सकते हैं। सर, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये एक छोटा अमेंडमेंट है, लेकिन कभी कभी एक छोटा अमेंडमेंट बड़ा काम कर जाता है। ए स्मॉल स्टेप कैन बी ए जायंट लीप एट टाइम्स। इसको ये मत समझे कि बहुत छोटा अमेंडमेंट है, इसका प्रभाव बड़ा होगा। कभी कभी लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, कभी कभी नाम ही सब कुछ होता है। इसलिए जब हम न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को नाम बदलने का बात कर रहे हैं, तो सर हमारे देश में आज के दिन में टोटल 36 आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं और सब शहरों के नाम हैं। खास करके महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, और कई जगह एडहॉक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म कई सालों से चलते आ रहे हैं। और दिल्ली में ही दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ऑलरेडी है, जो दिल्ली हाईकोर्ट के अधीन काम करते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट से जो भी मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करना है तो वो अपने सेंटर में रेफर कर देते हैं। कभी कभी कोर्ट अपना अपॉइंट भी कर देते हैं अपने हिसाब से। तो हम सर आज जब ये नाम चेंजेस का बात आ रहे हैं, तो आपको मैं बताना बहुत जरूरी है सर। कभी कभी नाम से कंफ्यूजन भी पैदा होता है और नाम से आकर्षण भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कई शहरों के नाम में आर्बिट्रेशन सेंटर है, तो जब भारत सरकार पहल करके संसद में पारित करके एक बिल ला करके फिर हम जब एक सेंटर गठन कर रहा है, तो उसका स्तर भी उसी लेवल से बनना चाहिए और उसका हिसाब से उसका प्रोग्रेशन भी होना चाहिए। जब हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का बात करते हैं तो उसमें कई चीज हमको देखना पड़ता है, और इसमें ऐसे कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि ये जो नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, दिस इज वन ऑफ द आर्बिट्रेशन सेंटर इन द कंट्री, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इट इज अ सेंटर ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। पार्लियामेंट का एक्ट से जब पास करता है तो उसका एक महत्व होता है। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि दिल्ली में भी दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है और उसी नाम से अगर हम और एक बनाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन होता है। और दूसरी बात यह है, कुछ सदस्यों ने कहा कि 2019 में बिल लाए तो आज फिर दोबारा लाने का क्या जरूरत है। ये डायनामिक सिचुएशन में अगर हम जैसे परिस्थिति है उस हिसाब से कानून नहीं बनाएंगे तो फिर ये संसद है किस लिए है? संसद इसलिए है जब जब देश के लिए कुछ जरूरी कानून बनाना होता है तो इस सदन के माध्यम से उसको पारित करके बनाना होता है। माननीय सदस्य तो खुश होना चाहिए, सरकार को शाबाशी देना चाहिए कि हमने ये सूझबूझ के साथ जरूरत के हिसाब से आज ये अमेंडमेंट लेकर के आए हैं। और जब हम इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बोलते हैं तो ये पूरा देश का प्रतीक होता है।
ये एक शहर का नहीं होता है, नहीं तो लोग सोचेंगे कि ये दिल्ली वाला के लिए है क्या। और दूसरा, कई मेंबर्स ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं सर पूरा सुझाव को एक सम्मिलित करके एक साथ जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि आज तक हमारा जो भारत में आर्बिट्रेशन जो है वो सिंगापुर के तहत क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा कि भारत के जो बिजनेसमैन हैं या कोई डिस्प्यूट होते हैं तो विदेश क्यों चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, पेरिस, सिंगापुर, हांगकांग या कहीं और। हमारा देश में भी कई आर्बिट्रेशन का काम चल रहे हैं, लेकिन जो एडहॉक आर्बिट्रेशन को प्रिफर करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनको कंफर्टेबल लगता है कि एक एडहॉक आर्बिट्रेशन में हमारा यहाँ में काम चलते रहना चाहिए। लेकिन बड़ा जो वर्ग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मान्यता मिल चुकी है कि एडहॉक आर्बिट्रेशन से अच्छा इंस्टीट्यूशनलाइज आर्बिट्रेशन जरूरी है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। सर, इसमें मैं कुछ हमारे सदस्यों को क्लियर करने के लिए 2 पॉइंट मैं बता देता हूं। व्हाई इट इज एडवांटेज टू हैव इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, it determines the arbitration procedures in a very formal manner. All the popular institutions globally, they provide for an arbitration procedure, and it saves the parties and their lawyers effort of determining the arbitration procedure. And some institutions also provide service of drafting an arbitration clause. जब arbitration हमारा सेंटर बनता है, वो पार्टीज को मदद करते हैं, और जैसे निशिकांत जी ने कहा उसमें क्लोज होना चाहिए। इस बिल पास होने के बाद मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार का, क्योंकि भारत सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट होता है, तो हर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा भारत सरकार का उसमें क्लोज दिया जाएगा, और जिस क्लोज के तहत जो भी केसेस उत्पन्न होगा वो इसी इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में तय किया जाएगा। इसके बाद इसके पास एफिशिएंट पैनल आर्बिट्रेटर्स होगा, और जब आपके पास क्वालिफाइड इंटरनेशनल रिप्यूटेड पैनल आर्बिट्रेटर होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस होते हैं, और लोग जब कॉन्फिडेंस होगा तो आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भारत जो है ट्रूली इंटरनेशनल सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन हब बनना चाहिए, तो आप तो खुले दिल से समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये बिल उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया, और कई लोगों ने सिंगापुर के बारे में जिक्र किया, तो मैं आपको 1-2 पॉइंट बताता हूं। सिंगापुर इतना बड़ा सेंटर कैसे बन गया है। एक तो जो सिंगापुर का जो लोकेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग होने के साथ साथ उसको एक न्यूट्रल वेन्यू के रूप में लोग देखते हैं। छोटा देश है लेकिन हाईली उसका एफिशिएंट सिस्टम वहां है, तो कोई भी पार्टी डिस्प्यूट होते हैं तो वो सिंगापुर जाने का प्रिफर करते हैं। अभी हम लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुए थे, मैं और भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम दोनों साथ में थे। कई लोगों से मैंने बात किया, इवन वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो एमपीज हैं, मंत्री हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो वहां मेंबर्स हैं, और बाकी लोगों से मैंने बात किया। सबने एक चीज को कहा है, मुझे उन लोगों का बात सुनकर के अच्छा लगा कि भारत एक उभरता हुआ देश है, इकोनॉमिक आर्थिक ताकत है, और इंडिया की ओर लोग देख रहा है, और आने वाला दिन में इंडिया ही एक मेजर आर्बिट्रेशन का हब बनेगा। ये कॉन्फिडेंस इन्होंने जताया है। जब लोग भारत की ओर देख रहे हैं तो हम प्रोएक्टिव होकर के जो जो कदम उठाना चाहिए भारत सरकार और इस संसद के माध्यम से हमको उठाना चाहिए। और जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कल्पना लिया है, और 2016 में जब प्रधानमंत्री जी ने एक विजन हमारे सामने में रखा, मैं कोट करना चाहता हूं। जब यहां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुए थे दिल्ली में, नेशनल इनिशिएटिव टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट इन इंडिया, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, मैं कोट करना चाहता हूं। एन इनेबलिंग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इकोसिस्टम is a national priority for India. We need to promote India globally as an arbitration hub.
as Roscoe Pond famously remarked, the law must be stable, but it must not stand still. We need to take inspiration from beyond our shores. इसलिए सर, हम जब एक इंटरनेशनल हब के बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए, और हमारे पास सेंटर भी बने हुए हैं, और उसका जो कंपोजिशन है उसका भी बनाने का हम पूरा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर, कई मेंबर ने इसके अलावा जो मुद्दा उठाए हैं, जैसे कि पेंडिंग ऑफ केसेस, ये एक तरह से बहुत अच्छा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है उसके तरह ये बहुत एक बड़ा रास्ता हमको दे रहे हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ पेंडिंग केसेस इस देश में 5 करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें कई कारण हैं, और ये कारण हमको इस सदन का सांसद होने के कारण, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण सर हमको ये जानकारी होना आवश्यकता है। ऐसे नहीं है, कुछ लोग कह देते हैं कि जजेस लोग क्यों काम नहीं करते हैं, और लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं कि आप कानून मंत्री हैं, अब 5 करोड़ पेंडिंग होने वाले हैं, आप क्यों कदम नहीं उठा रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी जजेस के ऊपर भी अटैक करते हैं कि ये जजेस क्यों इतना केसेस पेंडिंग रखा है, क्यों काम नहीं कर रहा है। तो सभापति महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले के मुकाबले में डिस्पोजल ऑफ द केसेस कई गुना आगे बढ़े हैं, लेकिन आज मान लो एक जज के पास 50 केसेस डिस्पोजल होता है तो 100 केसेस नहीं भी आते हैं। जब भारत उभर रहे हैं, सबको एक अवेयरनेस आए हैं, सब कोर्ट जा रहे हैं, कहीं भी आपको कुछ डिस्प्यूट होगा तो सब वकील लोग को पकड़ते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं। तो जिसके हिसाब से मैं मानता हूं कि जो पेंडिंग ऑफ केसेस है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका चिंता सबको करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए और इस सदन को भी करना चाहिए, और साथ साथ जुडिशरी को भी इसको चिंता करना चाहिए, क्योंकि सर लगभग 80% से ज्यादा केसेस पेंडिंग तो लोअर कोर्ट्स में है, और लोअर कोर्ट्स का जो जजेस है, डिस्ट्रिक्ट जजेस है, सेशन कोर्ट्स के जजेस होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनके जजेस का नियुक्ति राज्य सरकार से बातचीत करके हाई कोर्ट के देखरेख में होते हैं, उसमें भारत सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए हाँ, हाई कोर्ट का जजेस और सुप्रीम कोर्ट का जजेस का अपॉइंटमेंट में भारत सरकार का उसमें रोल होता है, भारत सरकार उसमें बहुत बड़ा योगदान करते हैं, लेकिन इसका जो परसेंटेज ऑफ पेंडिंग ऑफ केसेस आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कितने हजार केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में कितने हैं और लोअर कोर्ट्स में कितने हैं। तो पूरा देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, हमारे जजेस मेहनत करते हैं, जजेस बहुत ज्यादा केसेस डिस्पोज कर रहे हैं आजकल। एक एवरेज में एक जज सुप्रीम कोर्ट में भी एवरेज में एक जज कम से कम 40-50 केसेस को डिस्पोज करते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होते ऐसा, सिर्फ भारत में होते हैं, लेकिन इतना बड़ी संख्या में केसेस आते हैं, उसको डिस्पोज करने में जितना भी करें, लेकिन उसका संख्या बढ़ते जा रहा है। इसका चिंता सबको मिलकर करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाया है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आंकड़ा अभी मैं नहीं कहूंगा, लंबा हो जाएगा, मैं बाकी जो क्वेश्चन आवर होते हैं उसमें भी मैं बताता हूं कि 2014 के बाद जिस स्पीड से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं वो काफी नहीं हो सकते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले 3 गुना हमने बढ़ाया है। जितना भी जो हाई कोर्ट से नीचे का जितना भी कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई गुना हमने उसको बढ़ाया है, लेकिन हम सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के माध्यम से हम देते हैं, हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट उसको देख रेख करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, लेकिन राज्य सरकार उसको बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। तो राज्य सरकार और हम मिल करके इसको देखना है, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, मिल करके काम करने का चीज है। सर, क्योंकि आपने एक समय दिया है, मेरा पास कुछ तर्क था, लेकिन अभी 5:30 होने वाले हैं, अगर आप 5 मिनट देंगे तो शायद मैं 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं। 2 मिनट क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आए हैं, और मेरा पास पूरा तर्क है और जवाब भी है, और मुझे कॉन्फिडेंस भी है, मेरा ये पूरा जवाब होने के बाद
आप उस जवाब के ऊपर में सवाल नहीं कर सकते, ऐसा तर्क मेरा पास है। फिर भी मुझे समय का मर्यादा को याद रखना है, इसलिए मुझे ज्यादा अभी कहने का इजाजत नहीं है। मुझे इसका स्पीकर साहब ने इजाजत नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर से माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, खास करके जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया है। डॉक्टर अमर सिंह जी, रमेश बिदुरी जी, प्रोफेसर सौगता रॉय जी। प्रोफेसर सौगता रॉय के बारे में जरूर मैं कहूंगा कि आप पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ साथ नए जो घटनाएं होते हैं, जो अपडेट होते हैं, उसको भी पढ़िए। आप कुछ सवाल करते हैं, आपने जो एक मुझे क्वेश्चन किया बिल्कुल गलत। आपने कहा कि जो इंटरनेशनल ये सेंटर ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हमने खत्म करके ये NDIAC बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो ICADR वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको खत्म करके हमने एक नहीं बनाया। तो आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट कीजिए, क्योंकि आप कभी कभी बोल देते हैं और मेरा क्लैरिफिकेशन को लोग सुनते नहीं हैं, और आपने जो गलत बात बोला उसको सच मानते हैं। ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। इसलिए जो भी हम इस सदन में कहें, सोच समझ करके, रिसर्च करके, तर्क के साथ हमको अपनी बात रखना चाहिए। सर, मैं विश्वास रखता हूं कि इस अमेंडमेंट के बाद जब हम नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में हम स्थापित करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जरूर ग्लोबल हब ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बनेगा, और बिजनेसेस हमारे पास बाहर से भी आएंगे। और हिंदुस्तान के अंदर में इतना ताकत है कि हम अपने बिजनेसमैन, अपने कॉर्पोरेट हाउस, अपने लोगों के दम से इंडिया का जो पोजीशन है दुनिया में, एक वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नेशन के रूप में उभर के आएगा। बाकी सदस्यों सबने आपने जो मुझे इसमें समर्थन दिया है, साथ में हमारे वीरास्वामी कलानिधि जी, कृष्णा देवालू जी, दानिश अली जी, सुप्रिया सुले जी, और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी। ये जज साहब है, रिटायर्ड जज है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जज रहे हैं, और उन्होंने उस दिन कश्मीर में जा करके जो अच्छे बातें कही है मेरे बारे में, हमारे सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप जज है, सच बात आप कहते हैं, और आपने कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए भारत सरकार ने जो भी कदम उठाया सराहनीय है, आपने कहा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ हनुमान बेलीवाल जी को मौका दिया था, लेकिन उन्होंने अपने बात नहीं कह पाया, वो दूसरे विषय में चले गए। निशिकांत दुबे जी ने अपने तर्क सरकार के पक्ष में रखा, और साथ आप जो सदस्य नहीं बोले, फिर मन से आपने समर्थन दिया है, मुझे मालूम है। इसके लिए पूरे सदन को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 15 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 2 से 15 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। I request that the bill may be passed. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।
माननीय सदस्यगण, आज संध्या को 6 बजे संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी, राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू जी का विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वह सभी इस समारोह में सम्मिलित हो। माननीय सदस्यगण, 17वीं लोकसभा का 9वां सत्र अब अपनी समाप्ति की ओर है। ये सत्र 18 जुलाई 2022 को आरंभ हुआ तथा 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ। हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय कि 18 जुलाई 2022 को 4 नए सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने के बाद अब सभा में कोई स्थान रिक्त नहीं है। संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों द्वारा भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को 23 जुलाई 2022 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विदाई दी गई। भारत गणराज्य की नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 25 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुई, जिनकी कुल अवधि 44 घंटे 29 मिनट रही। इस सत्र के दौरान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विधायी एवं अन्य कार्य किए गए। इस सत्र के दौरान 6 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 तथा ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर 5 घंटे 5 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें 39 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद विधेयक को सदन द्वारा पारित किया गया। सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 318 मामले अभिलंब लोक मत के 98 मामले उठाए गए। संसद की स्थायी समितियों ने सभा में 41 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान 46 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 47 वक्तव्य दिए गए, जिसमें 2 वक्तव्य उत्तरों में सुधार से संबंधित थे तथा 3 वक्तव्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में दिए गए। सत्र के दौरान समृद्ध मंत्रियों द्वारा 1641 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। सभा में मूल्य वृद्धि और भारत में खेलों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के अंतर्गत 2 अल्पकालीन चर्चाएं भी की गई। मूल्य वृद्धि पर चर्चा दिनांक 1 अगस्त 2022 को संपन्न हुई, जिसमें 32 मान्य सदस्यों ने 6 घंटे 25 मिनट तक चर्चा की गई। ये चर्चा समृद्ध मंत्री के उत्तर के साथ संपन्न हुई। भारत में खेलों को बढ़ावा दिए जाने और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी आंशिक चर्चा की गई। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य की बात करें तो सत्र के दौरान शुक्रवार 5 अगस्त 2022 को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 91 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। श्री जनार्दन सिंह सिंगरीवाल के अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर चर्चा पहले, दूसरे, 7वें और 8वें सत्र के दौरान हुई, जो इस सत्र के दौरान 5 अगस्त 2022 को जारी रही। ये विधेयक 5 अगस्त 2022 को सभा की अनुमति से वापस लिया गया। श्री गोपाल शेट्टी जी के लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक
2019 नई धारा 29 का अंत स्थापन पर चर्चा 5 अगस्त 2022 को आरंभ हुई। इस विधेयक पर चर्चा अगले सत्र में भी जारी रहेगी। माननीय सदस्यगण, 27 जुलाई 2022 को मोजम्बिक की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां के संसदीय शिष्टमंडल ने सभा की कार्रवाई को विशेष बॉक्स में बैठकर देखा। मैं सभा की कार्रवाई का संचालन करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए हृदय से आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मुझे सक्षम और विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए मैं महासचिव की सराहना करता हूं। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में सम्मत एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, अब हम वंदे मातरम की धुन के लिए खड़े होंगे। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।